supposed to walk on this. No. Okay, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विंट्री चिली आफ्टरनून, और हिंदी में बोलेंगे कि ठंड से ठिठुरते सर्द हवाओं के साथ इस भरी दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक खास फिल्म के लिए हम सब ने आपको बुलाया है, आमंत्रण भेजा। ये आमंत्रण अपने आप में अनोखा है हमारे लिए। हम बहुत सारी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, बहुत सारी फिल्मों के हिस्से होते हैं, बहुत सारी फिल्मों के लिए साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, लेकिन अलीगढ़ अपने आप में अनोखा इसलिए है कि अलीगढ़ को जो बना रहा है या जिसने बनाया है या अलीगढ़ के साथ जो भी जुड़ा है, उसको ये बार बार बोला गया कि ये फिल्म करने के पहले आप 50 बार सोचिए। और शायद आज हम उस मुकाम तक या इस मुकाम तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन सारे लोगों ने जो इस फिल्म से जुड़े, चाहे वो इरोस हो, चाहे वो हंसल मेहता हो, चाहे वो शैलेश हो, या बाकी के जितने भी कास्ट एंड क्रू हैं, उन सब ने उस वार्निंग को, उस चेतावनी को दरकिनार किया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। And today when you go on social media, each and everybody is welcoming this decision. So I think this is our first big victory. This is the first hurdle we have crossed with the help of yours, with the help of the audience which is there waiting for this film. But today I'm going to say something else. हमने आपको भेजा, आमंत्रण किया, निमंत्रित किया इस अवसर पे, न सिर्फ आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, न सिर्फ आपको साक्षात्कार देने के लिए, बल्कि आपसे सपोर्ट मांगने के लिए। हम चाहते हैं कि कम आउट, हैशटैग कम आउट का इस्तेमाल करके आप जितने चाहे मैसेजेस, जितने चाहे संदेश आप भेज सकते हैं और इस फिल्म को सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ही इस तरह की फिल्मों को फ़ायदा होगा और हम जैसे लोगों का भी फ़ायदा होगा। और कंटेंट ड्रिवन फिल्मों का यह सिलसिला जो चल रहा है और आगे जाकर के एक बड़ा रूप लेगा। Now I'll talk about somebody whom I have seen for the first time when I was doing Chittagong, somewhere in North Bengal. Young boy, full of dream, full of enthusiasm, desperate to prove himself all the time, but a good at heart. Somebody that, from the first day I related to him in Latagodi in North Bengal. And from that day till now, we are great friends. We are very good friends. I have a lot of admiration for this man. Not only because, he's a good guy, but also because there is so much of passion. Without thinking what he's going to get out of it. But once he's convinced about something, he just goes ahead and gives everything that he has. That's all an actor can do. That's all we have. To use our passion to achieve whatever we want to achieve in our life. Somebody who hasn't thought even twice before, taking this decision to be part of Aligarh. Somebody I really envy, because in the time when the good films are happening, in the time when such great directors like Hansal Mehta are making film, he's just there in the right age. And people like me and so many actors like me, we spent our time waiting at home, waiting for that one script to happen. And those films used to be very rare. So Rajkumar, not only I welcome you, I envy you. Come on, Rajkumar. Okay, now I'll hand out the mic to him and ask him to do the difficult job of talking about his experience in working in Aligarh. First of all, thank you so much, sir. So whatever passion that you were talking about, you're the reason behind that passion.
You ignited that passion in me. I remember when I was growing up in my school years, I watched Shul, and I thought, this is what I want to be. This is what acting is. So thank you so much for giving us those lovely, inspiring performances. And same like Aligarh, I think Aligarh is one of your best work till date. I was so thrilled when I got to know that you are playing Professor Siras. And thanks to Mr. Mukesh Chavda, who suggested your name to Hansal sir. Working on Aligarh and working with Hansal sir and Manoj sir, it's a dream team for me. I couldn't ask for anything better than this. I always learn so much working with Manoj sir. I have worked with him before in Chittagong. And with Hansal sir, we all know like he's like my family. It's always a responsibility on me, on my shoulders, to do something different with my characters. I should not remind him of his last film, of his last character. So he challenges me as an actor, and I always take that challenge as an honor. So thank you so much, sir. Thank you for giving me this chance again. And I'll do anything and everything for you forever. Thank you. Great. Sir, but I have a request. Yeah. You know, we have worked together on 2 films. This is, of course, a bigger film, and we have spent a number of days together. I don't have any single picture with you. So do you think I can take this opportunity and have a selfie with you? I'm very bad with selfie. I'm not. It's fine. Okay. You are a very good-looking man, sir. Thank you. किसी ने पहली बार बोला good looking. आदमी ने पहली बार बोला, सर औरतें बहुत बोलती हैं. Okay, now is the turn of the captain of the ship. कप्तान के आने का समय हो चुका है. कप्तान के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं. मुझे अच्छा लगता है इस आदमी के बारे में बात करना. 93 में जब पहली बार मैं आया था मुंबई शहर पे, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि एक अच्छा खासा रंगमंच छोड़ के आया था. मैं थिएटर कर रहा था और यहाँ पर एक बहुत अच्छा दोस्त था मेरा जो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका था. वो था आशीष विद्यार्थी. इस फिल्म में उन्होंने कमाल का काम किया है. आशीष विद्यार्थी इस आदमी के साथ काम कर रहे थे. ये निर्देशक थे उस समय. एक टीवी का टेलीफिल्म बना रहे थे. तो पहली बार जब मैं काम किसी से मांगने गया था तो इस शख्स से मांगने गया था. और मैंने सुना था कि यहाँ पर डायरेक्टर्स जो है वो भगा देते हैं, बहुत ही रूड होते हैं. लेकिन ये व्यक्ति जिस अंदाज में मुझसे मिला और जिस तरीके से मिला, आई मीन फ्रॉम दैट डे टिल नाउ आई एम ग्रेटफुल टू दिस मैन ओनली फॉर दैट जेस्चर दैट इज शोन when I went out to meet him. But apart from that, he's become a very close friend of mine. He's been part of my ups and downs. He's part of my misery. He's been part of my miserable time. He has seen the bad temper, the good temper of Manoj Bajpai. He's seen me, moving everywhere, not meeting him. But one thing we always made sure to do, and that was talking to each other on the phone, getting in touch with each other. Always, in any time of crisis or any time of celebration. But I will never forgive him for not coming to me directly. He could not think of me as serious. And Mukesh Chavda, the casting director, suggested my name. Somebody who is so close to me, he could not think of my name. But Hansal, I have forgiven you for this. You know why? I have seen the film and I have seen the trailer. तू चाहे लाख पाप कर चुका होता तब भी तुझे माफ कर देता. तो तू ऊपर आ जा, गले मिलते हैं और माफी दे देते हैं. अच्छी सी ताली बजाइए. अलीगढ़ बनाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है.
अभी हंसल से हम हंसल के नज़रों से हंसल की जो पर्सपेक्टिव है या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम सुनने की कोशिश करेंगे। एक मौका है क्योंकि यहाँ से हमारा हमारा प्रमोशन शुरू होता है जो कि देश के हर कोने में जाएगा। और हमारे समीर गोगटे साहब इरोज का अगर दिल आया तो हम लोग विदेश में भी जाएंगे। Okay, Hansal, can you share a few of the moments that we've shared? First, I want to just thank media. Right. The media has been very, very supportive from the time we have announced Aligarh. जब हमने पहला लुक अनाउंस किया, जब हम शूटिंग कर रहे थे, उस दिन से लेकर आज तक मुझे पता है कि आज बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. I am really, really thankful. Keep supporting us this way. I just want to add on that, sir. In this film, I'm playing a journalist, so now I can totally understand how much effort and pain you guys put in for a story. So thank you so much. Thank you, really. So I want to thank all of you. And हाँ मुकेश छाबरा को बहुत थैंक यू बोल दिया. थैंक यू मुकेश. मैंने राजकुमार को कास्ट किया था. एंड नहीं ये अलीगढ़ बहुत ही इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म क्योंकि इसमें एक तो पर्दे के सामने मतलब आप देख रहे हो दो मतलब शायद भारत के सबसे अच्छे एक्टिंग टैलेंट को टू अ फाइन इंडियाज फाइनेस्ट एक्टिंग टैलेंट्स आर लॉकिंग हॉर्न्स ऑन स्क्रीन. दे आर नॉट प्लेइंग लवर्स बट आई थिंक समवेयर इन द फिल्म दे फॉल इन लव with each other. And along with them there's an ensemble which has done a wonderful job. But behind the scenes we have, I think, perhaps one of the finest teams that I could have got to make this film. I have not made this film. This film has been made because of perhaps the blessings of Professor Siras, first of all. Professor Siras, his story fell into my lap. That story fell into my lap. The fact that I got attracted to the story and I took it to my long-time collaborator, brother, friend Apurva Asrani, who has been editing my films. I asked him to write it and he wrote, Apu, you have written your life's best script in your first film. I don't know what you'll do next. I found this wonderful director of photography, Satyaran Nagpal, who's sitting there quietly in that corner. Can you both of you join us? Please join us. Please, Satya and Apu. Satya, Apu. For the first time in my career, I thank you, Eros. I could afford a production designer. Indranil. Indranil, come up. And for the first time, I had a producer who did not interfere with me. Shailesh Singh. Come. And the guy who's taking all the credit for casting Manoj, Mukesh Chabra. और हंसल के बेटे तुम ऊपर आ जाओ. जय, the chief AD of our film. पिया कहाँ पे हो? Our costume designer. She's Pia dressed me Benegal. so well. As Siras. Pia has done costume for me in Zubeda. So it's a very long and old association, which has been continuing since a long time. Alok. So, Pia, thank you very much for coming all the way. Alok. So ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अभी हमने नाटक जो है we have just performed our play. Okay. But this is not only the team. I mean, there are 60, 70 people who put in their sweat and blood to make it happen the way it has happened. And thank you, Apu, for writing such a fantastic role for me. And it had everything. I just had to work hard. That's it. Raj, thanks again. Hansal, thank you very much. You've always been very, important part of my life. I thought you were going to say you've always been very patient.
Yeah, I was very patient. नो जिस तरह की जिस आप दोनों से, हंसल आपसे भी और मनोज आपसे भी, जिस तरह की फिल्म को फिल्म को अप्रिशिएट करा जा रहा है, आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा जा रहा है मनोज, और हंसल जी ने कहीं कहा कि ए सर्टिफिकेट इस तरह के ट्रेलर को, और यकीनन ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिस पे एतराज करा जाए। इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? यकीनन मीडिया तो आपके साथ है जैसे आपने कहा शुरू से लेकर अब तक, लेकिन आपकी अपनी अपनी खुद की रणनीति क्या होगी? रणनीति वही है जो हमारे संविधान में हमें जो रणनीति दी गई, अधिकार दिए है, वो हम करेंगे। हम खटखटाएंगे, अभी हम जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास, उनसे बस यही है कि हमारे पास 1 महीना रहता है फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और ये फिल्म न सिर्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटरटेनमेंट मीडियम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है हमारे देश के लिए, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। और ऐसी फिल्म के प्रमोशन पे ये इन्होंने रोक लगा दी है ए सर्टिफिकेट देकर, क्योंकि ये ट्रेलर सिर्फ ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म्स के साथ चल सकता है। तो ये उन्होंने रोक लगा दी है एक महत्वपूर्ण फिल्म पर। इस सरकार के अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है। तो मैं इसके खिलाफ आई एम शोइंग यू द ट्रेलर इन प्रोटेस्ट, आई एम शोइंग इट यू इन प्रोटेस्ट एंड एब्सोल्यूट एंगर। ओके मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हंसल ने कहा कि ट्रेलर तो दिखाया है लेकिन कहीं कहीं नाराजगी है, कहीं गुस्सा है इस बात का कि ए सर्टिफिकेट की, और यकीनन बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, एक पैगाम के साथ फिल्म है। नहीं, हम लोग जब हमने सुना था कि ट्रेलर को ए सर्टिफिकेट मिला तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ट्रेलर को भी सर्टिफिकेट मिलता है क्या। और तो नहीं, 22 साल के करीब में पहली बार मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ट्रेलर को भी ये सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मैं देखूं, अगर डिजिटली अगर आप जाके देखें तो कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं, वो अच्छे हैं, सबको बनाने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि डबल ए सर्टिफिकेट उन ट्रेलर्स को मिलना चाहिए। इस बेचारे ट्रेलर को तो बख्श देते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ सीरियस अपनी बातें किए जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो नहीं रही है, ना कही जा रही है जिससे कि एक बच्चे की सेंसिबिलिटी को धक्का पहुंचेगा। मतलब वी आर ऑल टेकन अबैक, वी आर ऑल शॉक्ड। हंसल ने सही कहा कि कहीं ना कहीं चीज़ों को फिर से सुधारने की ज़रूरत है सेंसर बोर्ड के लेवल पे। मैं तो एक्सट्रीम पे सोचने वाला आदमी रहा हूँ इस मामले में, कि मेरा तो मानना है कि सेंसर जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। एंड ख़ास करके इस तरह के समय में जहाँ पर डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हो सर तो मॉरल पुलिसिंग तो होनी ज़रूरी है, राइट? No, this is, I mean, when the censor board, obviously when they saw the film, I've just received the letter where they've asked for certain cuts. I'm a bit surprised at the cuts that they've asked for. They are the film in many ways. I mean, it's about loneliness, about relationships. It is about dejection, and it's about a homophobic society. What has happened is that the censor is behaving exactly like the people who suspended Professor Siras. They are behaving like the homophobic society that did this to Professor Siras. So, the cut that they've asked for in the film, again we are taking it to the tribunal. It is just you are breaking the back of a smaller film. You are making us run around pillar to post when we should be taking the film to you, showing the film to as many members of the media, as many important people as possible, and promoting it so that these films are seen and more films like this are made. At that time, we are running around to the censor board, to the tribunal, trying to answer why, justifying free expression. What is the subject? What is the subject? Homosexuality is a sexual preference. और मॉरल पुलिसिंग करने वाले कौन है भाई? कोई भी नहीं। मॉरल पुलिसिंग करने वाला है कौन जो ये कह सके? एक बहुत पुराना गाना है, आप पैदा भी नहीं होंगे, वो उस समय गाना आया था कि वो रोटी फिल्म का गाना था कि जिसने खुद गुनाह नहीं किया है वो पहला पत्थर मारेगा, जिसने पाप ना किया हो पापी ना हो। तो मॉरल पुलिसिंग करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है एक दूसरे पे। और ऐसा तो है नहीं कि कोई हमने कत्ल किया है फिल्म बना करके। हम वो सारे काम कर रहे हैं जो संवैधानिक रूप से
हमें जो अधिकार मिला है उसके अंदर ही कर रहे हैं, उससे बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मेहता सर, कल आपने करण जौहर को मूवी दिखाया था यहाँ पे आपके यहाँ, तो क्या उनका रिएक्शन था और क्या रीजन था उनको दिखाने के लिए? रिएक्शन आपने मीडिया पे देखा है, मतलब मुझे दोहराना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है कि जब मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ आप सुन लो तो मतलब उसको दोहराना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बट रीजन क्या था बिहाइंड दिस? बिकॉज यू नो, अगर रीज़न आप करण जी से पूछिए। मैं तो बहुत के फ्रेटर्निटी, फिल्म फ्रेटर्निटी के, मतलब हम लोग हमेशा समझते थे कि हम आउटसाइडर हैं इस फ्रेटर्निटी में, हम बाहर के लोग हैं, और एक वो लोग हैं जो बड़े स्टार्स के साथ बड़ी बड़ी चकाचौंध वाली फैंटेसी फिल्म्स बनाते हैं, और हम लोग हैं जो हम एक फिल्म बनाते हैं जिसमें आर्ट और कल्चर और इन चीज़ों को हम अपहोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो एक अंतर हमारे मन में था। कल जब करण को फिल्म दिखाई, मतलब मेरे करियर के 20 साल में पहली बार करण जौहर से मिला मैं, तो मुझे लगा कि वो अंतर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसने फिल्म को अपना लिया था कल। ये मैं करण के बारे में कहना चाहूँगा कि करण ने एक फ़िल्म बनाई थी दोस्ताना 2008 में शायद, और दोस्ताना में जिस तरीके से करण ने होमोसेक्सुअलिटी को डिपिक्ट किया था, उससे मैं बहुत नाराज़ हुआ था, क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया गया था कि होमोसेक्सुअल लोग सिर्फ कॉमेडी या मजाक उड़ाने के लिए स्क्रीन पे हम दिखाते हैं उनको, और ये हमारा ट्रेंड चलता है। क्योंकि हम, होमोफोबिया क्या होती है? होमोफोबिया ऐसे थोड़ी होता है कि यू आर गे, आई डोंट लाइक यू। वी विल फाइंड सम अदर वे टू मेक फन ऑफ यू, टू से कि तुम हमसे अलग हो। ये ट्रेलर में भी जो हुआ है, ये होमोफोबिया है। हम कह नहीं सकते इस सोसाइटी में कि हम अलाउ नहीं करेंगे ऐसी फिल्म को, तो हम फिल्म को इस तरीके से मारेंगे, अटैक करेंगे, एक कैरेक्टर को हम अफेक्ट करेंगे। तो करण के साथ यही हुआ था। तो आई वॉज वेरी वेरी अपसेट। मैंने आर्टिकल लिखी थी मैंस वर्ल्ड में करण के खिलाफ, दोस्ताना के खिलाफ, और करण और मैं जब मिले 2-3 बार तो वी वर वेरी कट्टी विद ईच अदर, यू नो। बट व्हेन द प्रमोशंस ऑफ दिस फिल्म बिगैन, और करण ने देखा और करण ने पढ़ा कि स्क्रीनिंग्स के बाद, फेस्टिवल्स के बाद, कि मतलब इस फिल्म का मुद्दा असल में क्या है, कि ये सेक्सुअलिटी से आगे है, कि आप अपने कमरे के अंदर, अपने प्राइवेट स्पेस में जो करते हैं, ये आपका प्राइवेट बिजनेस है। किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो आपके कमरे के अंदर आए और पूछे। तो मॉरल पुलिसिंग का सवाल उठता ही नहीं है। यू सी, इट्स इनसाइड योर बेडरूम। आप यहाँ आकर स्टेज पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बात करण को समझ में आने लगी, तो ही हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड अस टू कम एंड सी द फिल्म। और कल मैंने एक छोटा सा सुना जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और करण ने खुद माना कि शायद उसने स्टीरियोटाइप किया था 2008 में, और मगर उसके कुछ रीजंस थे, मगर ही हैज़ एक्सेप्टेड दिस फिल्म एज अ प्रोग्रेसिव वे, और इसीलिए वो बाहर आए हैं। ही हैज़ कम आउट टू सपोर्ट दिस फिल्म। सो नाउ करण इज़ माई फ्रेंड। मेरा सवाल है, अलीगढ़ फिल्म जो है किसी के लाइफ पे बनी है, उस कैरेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोनली आदमी की, जो आदमी लोनलीनेस की या अकेलेपन का जीवन जीता है, उसके आँखों को पकड़ पाना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। एक लोनलीनेस बॉडी में दिखना, लोनलीनेस पूरे चेहरे पे दिखना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। मेरे ख्याल से ये मुझे लगा था कि अगर मैं इसको पकड़ पाया तो सीरस को पकड़ पाऊंगा। सेंसर की बात कर रहे हैं और एवरीबडी इज शॉक्ड दैट फिल्म हैज गॉट ए सर्टिफिकेट। कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट व्हाट ऑब्जेक्शंस हैज बीन रेज्ड बाय सेंसर बोर्ड? एंड द फिल्म हैज नॉट, they have proposed an A certificate. Let me clarify. They have proposed an A certificate which we have not accepted. We are taking it forward, and let me do that. Let me give them a fair chance. To be, in all fairness, when we showed the film to the censors were very courteous. They were more courteous than I have seen in the last 16 years of my career. I have never been asked to sit down in a censor board screening. They asked me to sit. They spoke to me with utmost politeness, and they tried their best to come out of their own shell. But unfortunately, it's not easy to come out. But sir, any specific reasons they gave to to propose? They've given me reasons. I mean, let me take the film forward. You know, I'm right now, my anger is more at the trailer. You have sort of aborted the promotions of the film by certifying the trailer with an A.
with an A certificate and saying what that the theme is adult. What is adult in the theme of the trailer? Please tell me. Somebody here tell me what is adult in the theme of the trailer. Yeah, so please write about it tomorrow. Yeah, please talk to him. Yeah, please. Yeah, please. But he's not part of the censor board. He's part of a committee. So that committee, what they're doing right now is a process of going through all the problems that the censor board has been faced with and is facing right now. And that process is studying a lot of problems, and that's going to take several months. So I really can't answer that question. And they have a lot of backlog work. So I don't know where this is going to come, but I'm sure Hansal can speak to him, and I don't know where I come in over here, really. No, I see that committee, but don't mix up the two things. That's a committee that has been appointed. The committee has been appointed to look into the working of the censor board and to suggest improvements. I mean, there was already one committee. There was a committee. They will come out with their own recommendation and their own observation. Like the Mudgal committee. Like the Mugdal committee. Which nothing has happened. Okay, check. but Hello. Let's talk about the film. No, the censor, we will fight it. हाँ मतलब I don't want to get into it right now. वो मतलब वो एक censorship पे एक मुद्दा है जिस पे हम we will have a dialogue separately. Let's talk about the film. Let's talk about better things. Now here I'll just take the moment of thanking Eros again and again for supporting the film, and I would like to call upon Samir Gokte. Please, Samir, come here. He's the representative here from Eros and Eros team. I mean, thank you very much, guys, in support. So, Samir is a very old friend of mine. He's not been picking up my phone since a long time. Samir, love you, man. I just thought that you should be part of the team who is standing on the stage. I mean, you should not be there. No, it is admirable that in today's times, Eros, when I narrated the subject to Eros, they accepted in 5 minutes. They said, make this film. And the fact that Eros backed it without any questions is the reason we are here today. And they are the ones we should be thanking first. Yeah. I'm very emotionally moved by Aligarh. मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है. इस फिल्म की लीड परफॉर्मेंसेस कमाल के नहीं, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, लेकिन हंसल मेहता ने बहुत ही खूबसूरत और वाकई एक सोचने वाली फिल्म बनाई है. जब आप ये फिल्म देखोगे तो आप वाकई घर जाके सोचोगे इस फिल्म के बारे में. और आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि निर्माता निर्देशक जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी फिल्में बनाएं दैट डोंट ओनली मूव यू एंड इमोशनली एनरिच यू बट दे ऑल्सो मेक यू थिंक. मैं इमीडिएटली बाहर आया हूँ तो आई एम ऑफ कोर्स कंपेल्ड टू स्पीक टू एवरीबडी एंड आई मस्ट बिकॉज ये फिल्म को सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. बट एक्चुअली आई एम वेरी मूव्ड बाय द एक्सपीरियंस राइट नाउ एंड आई होप मोस्ट पीपल will be because it's a film that you must see. शुरू हो गया आप यहाँ. मैं और आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ अलीगढ़ फिल्म के बारे में आया हूँ, सिर्फ अलीगढ़ फिल्म के बारे में बात करने. अभी फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनको ये फिल्म पहले ही दिखाई जा रही है. बिना डर के, बिना किसी संकोच के आप कुछ भी कर सकते हैं. बिना डर के और बिना संकोच के मैं कुछ भी कह सकता हूं. मेरी खामोशी सब कुछ कह गई है. उसके बाद क्योंकि डर लगता तो मैं किसी से डरता तो हूं नहीं. जो मेरे ख्याल है, मैं कमबख्त ख्यालों ने तो जिंदा रखा है, वरना सवालों ने कब का मार दिया होता. तो ख्याल मेरे हैं और हमेशा रहेंगे. And I'm very proud of my own feelings and thoughts. Unfortunately, some people may agree or disagree, but on one thing I can say
that on a film like Aligarh मैं कहना चाहूँगा कि there will be no disagreement. It's a very special film. मुझे क्यों दिखाया गया है? I am very honoured to have seen this film at such an early stage. मैं अपूर्वा असरानी जो इस फिल्म के जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, हंसल मेहता जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एरोस की फिल्म है, मैं उनको भी जानता हूँ. इन्होंने मुझे ये दर्जा दिया है, ये मौका दिया है कि मैं फिल्म को देखूँ और इस फिल्म के बारे में चर्चा कर सकूँ. So I'm very happy and I want not only me but I want every member of the film fraternity to see such an important and defining film. करण साहब आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं जिस तरह आपने कहा ना कि मेरे को भय नहीं लगता, सभी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है आपको डर. ये कैसे आपने उपजाया अपने अंदर कि आपको डर नहीं लगता? मेरे अंदर की कुछ जाग उठी, अंदर की ताकत जी. एज आई सेड कि हम फिल्म मेकर्स हैं, हम एंटरटेनर्स हैं. इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अपने ख्याल, अपने ओपिनियंस नहीं हैं. कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी हम किसी प्लेटफॉर्म पे कह देते हैं. एंड आई एम प्राउड टू बी अ फिल्म मेकर. आई एम प्राउड टू बी अ फिल्म मेकर इन इंडिया. आई एम प्राउड दैट आई हैव a voice because I'm a filmmaker and I hope I continue to have that voice. Your comments on the Jaipur Literature Fest, on the stage of the Jaipur Literature Fest was not really taken in good sense by a lot of people. I mean, your comments expressing yourself freely would sort of land you behind bars. I mean, there were many who appreciated your comments, but there were also few who did not like it. How would you respond to it? Just the way I think हमारी फिल्में होती हैं and we must take all kinds of opinions and all kinds of feedback, all kinds of criticism in the right way. So if I have an opinion, you could agree with it, you could not agree with it. It is my prerogative to have an opinion. It is your prerogative to agree or disagree. I firmly believe that. Karan, the issue that is at the center of Aligarh is the discrimination that the LGBT community faces. Do you think our country is perhaps intolerant towards that community and it is very, very similar to what the real people I think it is. I completely agree with the underlying message and what the filmmakers of Aligarh have tried to say. They believe that there should be no discrimination. I believe in the same. I believe Aligarh is an important film that speaks about the discrimination. I am not, none of us are above the law and we have to all respect the law of the land, but we are all entitled to fight in our own way for the right causes of life. I believe in the power of humanity. I believe in the power of a film like Aligarh and the messaging that it carries. I hope as a human being that the messaging of Aligarh translates itself efficiently through the emotional parameters of our country. करण, आपने इस जो विषय उस पर फिल्म बनाई थी दोस्ताना, आप प्रमुख मैंने बहुत दोस्ताना में भी कुछ क्रिटिसिज्म था कि स्टीरियोटिपिकल थी वो फिल्म. मैं मानता हूँ कि हमने एक ह्यूमर, एक कॉमेडी का पाथ चुना, बट मैं 2008 की बात कर रहा हूँ. तब मुझे लगा था कि कम्युनिकेशन अगर करनी है, अवेयरनेस अगर बिल्ड करनी है, तो लेट्स डू इट थ्रू अ मेन स्ट्रीम ह्यूमरस पाथ. शायद हमारी गलती थी कि वी डिड रिप्रेजेंट सम कैरेक्टर्स इन ए स्टीरियोटिपिकल फैशन. आई एम फीलिंग दैट एट दैट पॉइंट आई फेल्ट दैट वाज द ओनली वे फॉरवर्ड. लेकिन उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स बॉम्बे टॉकीज भी बनाई है which touched upon the issue with a certain amount of sensitivity, and I feel कि it's not about the issue, it's about humanity. And I think जब हम ऐसी पिक्चर देखते हैं अलीगढ़, तो it's more about humanity at a larger level, more than हम issue को लेके बैठ जाते हैं, उसको controversial बना देते हैं. There's a pro, there's a con, feedback की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, but वो core issue कभी मिटना नहीं चाहिए. वो जो लड़ रहे हैं इस कॉज के लिए, जो अपने इमोशंस को लिटरली दुनिया के आगे डाल रहे हैं, इट्स वेरी क्रिटिकल कि दैट वॉइस इज हर्ड एंड अंडरस्टूड. उस पर आप ऑफ कोर्स डिबेट कर सकते हैं, आप अपनी राय आगे डाल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यू फॉरगेट द मैटर. एंड फिल्म्स लाइक अलीगढ़ आर अ बिग रिमाइंडर ऑफ द इमोशनल एनर्जी ऑफ आवर टाइम्स. ए दिल है मुश्किल. The lead actor रणबीर कपूर, उनका दिल आजकल मुश्किल में है because of his breakup. So do you think मैं बस यही कहना चाहूँगा, I would not like to comment on anybody else or anybody else's personal life. I'm here to just say, and this is the last thing I'm going to say. आपने जो भी वहाँ जयपुर फेस्टिवल में कहा, you still stand by that statement because lately आमिर खान ने जो कहा था, उन्होंने उस बात से वो वापस हटे. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं है कि देश इंटॉलरेंट नहीं है. क्या आपको भी लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है?
I have said what I had to, and I don't want to comment any further on what my thoughts were. I do appreciate you asking me the question, thank you, but I would not like to comment on that anymore. I think I've said more. I'm here to talk about a film that I believe very strongly in. अच्छा करण, आप एक निर्माता निर्देशक के रूप में ऐसे सामाजिक संदेश की कोई फिल्म बनाएंगे आगे कुछ ऐसी? डेफिनेटली अगर मुझे कोई कहानी, जैसे अगर मुझे अलीगढ़ की स्क्रिप्ट मेरी तरफ आती तो आई वुड लव टू हैव बीन अ कमर्शियल एंड अ क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड दैट फिल्म. मेरे पास ज़्यादातर ऐसी कहानियाँ नहीं आती, बट आई वुड पुट दैट वर्ड आउट कि अगर ऑफ कोर्स ऐसे कोई टॉपिक पे अगर कोई अच्छी कहानी, इतनी सेंसिटिव कहानी मेरी तरफ आए तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. Watching you live right now and they want to know, do you relate to any of the character from the film? I related to the film. That means I related to each and every character. I was upset by the treatment meted out to the character by certain people, that means that it was performed efficiently, and it did more than having my sympathy. It had my thought engaged. Like, it's made me think, it's made me question, it's aroused me in a certain way, and I think that's what films should do. They should make you get out of the cinema, think about it, and have a strong opinion. I would really like to meet those people who have an opinion against it, because that means those minds are perhaps not as evolved. But for people who feel the emotional energy of this film, I hope that they spread the word and make sure more people engulf their presence into this. बार-बार रूमर्स आ रहे हैं कि वो अलग हो गए. क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि करण जी क्या मैं किसी और के पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा. मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा. हाँ, मैं कहना चाहूंगा आई एब्सोल्युटली लव्ड एयरलिफ्ट. एयरलिफ्ट के बारे में मैं बात कर सकता हूँ. मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी, बहुत बड़ी हिट है. अक्षय कुमार की मुझे लगता है सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है. मोर पावर टू द इंटायर प्रोडक्शन टीम. मेरे भी दोस्त हैं उसमें, निखिल, मधु, मोनिशा, टी सीरीज, एवरीबडी इज डन अ ग्रेट जॉब. निमृत, अक्षय दोनों मेरे पिक्चर में दोनों थे ना. निमृत इज आउटस्टैंडिंग. लंच बॉक्स पे मैं काम कर चुका हूं उनके साथ. अक्षय कुमार truly is one of the nicest guys in the business. No one better than him deserves this kind of big success. Recently, Anurag Basu has made a statement that he would rather work with Ranbir Kapoor than working with Salman Khan. Again, I would not like to comment on something. I'm very happy to be here. I mean, the fact that you're here to promote a film like this, to support a film like this. Right. But do you think any of our Bollywood celebrities, I think superstars, be it Salman Khan or Shah Rukh Khan or Amir for that matter, would do a film like this? Because every time we see, I mean, you did make a couple of films, and you know, every time the mainstream cinema makes a film like on homosexuality, it's more about everybody laughing at them. Look, I can't speak for anybody else. I can only tell you my experience. That when I was casting my omnibus film Bombay Talkies, it was very, it was not easy. I can say that there were lots of actors who had apprehensions about doing that film. I was extremely elated and happy when Saqib Salim and Randeep Hooda came on board to play the designated parts. Yes, I can definitely say that actors are very cautious about doing films like this, because there is a certain, and I don't know if it's their own personal perspective or point of view, sometimes the people that work for you or can influence you perhaps advise you differently and feel that will your image per se get tarnished or will it get affected. The names you mentioned, they are superstars, and I hope everybody looks at cinema as a platform to engage with on an artistic basis. And I hope that many evolved and mature superstar actors would also do films, and I'm sure I can imagine if you go to Amir Khan with a really strong, poignant film, he would totally engage with it. Shah Rukh and Salman and Hrithik, I've had many conversations, and I'm sure that they're all willing to, break through creatively and cinematically. I think people like us have to make films like that on a level that perhaps engages movie stars. And I think some of us, I'm not just speaking for myself, but all of us filmmakers have to also make braver themes. Sometimes we tend to play it safe for larger concerns, and if we don't get out of our own parameter, we'll never succeed on a creative basis. So to answer your question, yes, I do believe very strongly that it is something that takes a while for people to adjust themselves to, but I think some of the leading superstars of our country are definitely willing to take the chance if the film is offered to them on a certain, with a certain kind of energy that they would engage in. इतने व्यस्त हैं इन दिनों, आप लाइक शूटिंग करते रहते, बाहर फिल्म समारोह में पार्टिसिपेट करते रहते,
कोई कहता है कि डॉन और करण को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। काश मेरे पीछे इतने लोग लगे रहते, काश डॉन की तरह मुझे भी पकड़ना नामुमकिन था। मुझे अनफॉर्चुनेटली पकड़ना काफी मुमकिन है और इनफैक्ट कुछ हद से ज्यादा आसान है। तो अपने आप को थोड़ा मैं आई थिंक आई वुड से थोड़ा मैं अपने आप को थोड़ा दूर रखूं तो बेहतर होगा। मैं हर जगह अनफॉर्चुनेटली पहुंच जाता हूँ। चाहे आप कोई भी टीवी ऑन कर ले तो मेरा प्रेजेंस वहां होना जरूरी होता है, चाहे वो अवार्ड फंक्शन क्यों ना हो या एक्चुअली टू ओपन एन एनवेलप आल्सो आई थिंक आई लैंड अप। तो आई थिंक वो बिल्कुल गलत है आपका ये ऑब्जर्वेशन। मैं डॉन नहीं, मैं बस हर जगह का, मैं कौन भी नहीं हूं, मैं बस हूं। आपका लास्ट सवाल था ना, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से अलीगढ़ को रिसीव किया गया है वर्ल्ड वाइड और जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोग और मुंबई शहर के लोग आते रहे इस फिल्म को देखने के लिए, इससे यही लगता है कि अगर हम मतलब वाली फिल्में बनाएं और मतलब वाली फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान दें तो दर्शक काफ़ी हैं, उत्साह काफ़ी है लोगों में, वो कभी भी आपको जो है निराश नहीं करेंगे। Right. Yes, I came to know through Twitter that an Indian film is opening my festival after 17 years, which is quite an honor for us, and that too when I'm part of Aligarh, and which is creating such a buzz around the world, and not only around the world, even in our country, which is about a professor who is gay, So it's an amazing honor. I just hope and pray that after this festival is over, after this screening is over, the word of mouth is strong for the release time. My career has changed. I mean, I'm old enough now. My career will not change any further, but definitely I really want Indian cinema to change after this. Indian cinema to change for better for all the actors who are coming after us. They will have ample chances. They will be fearless, in doing these kind of roles. This is what I want. Actors and filmmakers should be fearless in expressing their creativity, their opinion on the screen. And this is what Aligarh is going to do. And I'm very, very, thankful to the entire team for accepting me in this role. Which is not only path breaking, but it's path breaking in many sense for this nation. नहीं, मेरे लिए क्या है कि मैं अब 22 years in this film industry. Nothing surprises me now after so many years. But yes, I'm always looking for great roles. With no fear, no insecurity, and there is no career plan as such. So Aligarh is one more film, one more great film that I have done in my career, and I'm very happy that these kind of subjects are being made in this country. I really thank Hansal for choosing this film. This film is about raising your voice against intolerance in our society. Right now, a lot of intolerance is going on in India as well, be it writers, filmmakers returning their awards. Do you think this is a very
good poignant subject in this day and age? I would say that, you know, who's not returning award and who's returning award is a democratic country. You know, everybody has an opinion. Everybody has a right to do so. You know, I don't have anything to say about it. I would just say that, you know, at this point of time, when all of you are here, all of you are gathering here for this moment, you know, which is a path-breaking moment in Indian cinema, you know, which this gives me ample reason to be very, very happy. बहुत ही बेहतर पा रहे हैं. आई थिंक हर साल इम्प्रूव हो रहा है और मामी की ग्रोथ हमारी आंखों के सामने है. हर साल इसका जो औहदा है वो बढ़ता ही जा रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे शहर में, मुंबई में एक ऐसा फेस्टिवल है मामी, क्योंकि बहुत फिल्म लवर्स हैं यहाँ पर इस शहर में, और ये हिंदी फिल्म का गढ़ है ये शहर. तो यहाँ पर तो ऐसा फेस्टिवल होना बहुत ज़रूरी है और इस मायने पर हो रहा है, तो बहुत सराहनीय बात है ये. I'm very happy. He's like family to me now, and this is our third film together. And inshallah, और भी होंगे आगे अभी. And this is a very special and very important film of our times. So I'm just waiting for the feedback now. It's our first screening in our country. जी. गवर्नमेंट से इस फिल्म को क्या लेना देना है? देश के लोग तैयार हैं, लोगों के लिए फिल्म बनी है, ऑडियंस के लिए फिल्म बनी है. एंड आई थिंक बहुत हमारी ऑडियंस आजकल बहुत ओपन है एंड दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट विद फिल्म. एंड और ये फिल्म ऐसी कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है. ये सब जो फिल्में हैं वो हो रहा है आज सोसाइटी में, और उसकी कोई वॉइस नहीं थी. सो थ्रू दिस फिल्म आई थिंक वी हैव अ वॉइस नाउ. और गवर्नमेंट और फिल्म का ऐसे कोई लेना देना नहीं है. Yeah. No, I feel very sad about when we divide people as per their sexual preferences. I think we all are human beings first, and then anything else. And I think each to his own. We have no right to interfere in anybody's personal life and whatever they're doing in their bedrooms or with their love life. I think it's their own decision. We are mature enough to decide for ourselves. I think being from FTR, I can absolutely understand what students are going through, and I'm with them on that. As far as returning the national awards is concerned, I think it's the people who are returning it. It's their own decision, and it's very courageous of them. I would definitely say that. But I think it's their way of protesting about whatever is going on in the institute. I respect the decision. Thank you. Thank you.
I'm having an extraordinary time. Such a thrill, such beautiful people, beautiful films, an amazing country. Yes, so I'm the head of the international jury and made up of a beautiful array of artists who are here to watch all of the films from around the world and name a winner for the Mumbai Film Festival. I think Indian cinema has inspired filmmakers from all over the world, and so we're just so pleased to be here to celebrate the magic of film. Yeah. Well, I'm a woman filmmaker, so I love Indian women filmmakers. I'm a big fan of everyone from Meera Nair to Deepa Mehta to Gurinder Chadha. Shekhar Kapoor as well is a friend of mine. So I love Indian cinema and just really feel fortunate that I was invited to come here today. Not a lot of African American filmmakers are invited to travel the world. And Mumbai is the first film festival that's asked me to be the head of a jury, and I'll never forget India for that. I really appreciate it. Obviously you've done a film which is about intolerance to a very large Yes. level. Unfortunately that's become a topic of Yes. discussion here Yes. as well. Yeah. What do you feel about that, the growing trend of artistic intolerance across the world and perhaps here as well, whatever you think? Yes, it's a big question, the idea of artistic intolerance and the fact that the artists are really leading the movement. Nina Simone, who was a great artist, once said that if an artist doesn't represent the times, who will? So it's really important that artists speak out, that they push a freedom of expression, that we rally around the idea that there can be nothing but cooperation when it comes to the artistic voice. And so I know there are a lot of challenges with that here, and I support artists wherever they are. Did you also get a chance to interact with Javed Akhtar, who was awarded the excellence? To say it again? Javed Akhtar, who was awarded the excellence in Indian cinema yesterday. Did you interact with him? What do you think about Yes, well, yes. I mean, what an honor to meet him. He was very kind. He welcomed me and said some very kind and lovely words to me. The thing about Indian cinema is the rich legacy. I don't think enough people around the world understand the generations and generations, the decades of stars, both in front of and behind the camera, that Indian cinema has produced. And so it's wonderful to learn more about it. At the Mommy opening night last night, I got to see clips of films from the 70s that I'd never seen. Really fascinating, and I loved it. I don't know their names, but they looked really good. They looked really good. I don't know where you find these older Indian gems, these jewels. We don't have access to them in the United States, so I'd love to see them. Maybe while I'm here. Yeah. Thank you very much. Thank you. Heard this story. I think it's a very interesting story, and I'm excited to watch it because of Hansal and Rajkumar Rao. I just think that art is above and beyond all boundaries. You know, art is actually a unifying factor. It brings people together, and that's how it should be. That's how it should be. That's how it's meant to be. Yeah? Thank you. नजर आए एक बार फिर हम कतारें देख रहे हैं। आप आज इस मूवी पर क्या फील कर रहे हैं? किस तरह की अलीगढ़ में पहली बार आज घर की बात तो निराली है, मतलब घर फाइनली घर होता है। और बम्बई शहर जो मेरा अपना शहर है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, वहाँ मतलब इतने लंबे तादाद में लोग हैं। इस थिएटर में जब मामी ने कहा कि रीगल थिएटर में आपकी फिल्म लग रही है, तो मैं घबरा गया था। इतने बड़े थिएटर में लोग भरोगे कैसे आप? लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों को निराश वापस जाना पड़ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है।
क्या उम्मीद करें कि और स्क्रीनिंग हो सकती है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कल सवेरे पिक्चर रिलीज हो जाए। अच्छा, क्या फर्क पा रहे हैं इस बार मामी में आप? 7-10 साल मामी अब एक तरह से और बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। सबसे बड़ा फर्क जो इस साल हुआ है वो ये है, हर साल मामी में फिल्में कमाल की आती है, इस साल की फिल्में तो मतलब लाजवाब है। और साथ साथ मैंने फ़र्क ये महसूस किया है कि ओपनिंग फिल्म जैसे, ना सिर्फ क्योंकि मेरी फिल्म है, लेकिन ओपनिंग फिल्म एक हमारी भारतीय फिल्म है, एक होम ग्रोन प्रोडक्ट को आप ओपनिंग फिल्म रखा है, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा स्टेप है। एक मेजर फिल्म फेस्टिवल में एक होम फिल्म को आपने ओपनिंग फिल्म बनाया है। एक सीक्रेसी जो बरकरार आप हमेशा रखते हैं, उन सब के बावजूद अलीगढ़ को डिफाइन करना हो तो आप क्या करेंगे? अलीगढ़ कैसे डिफाइन करूँ? अलीगढ़ को बस मैं ये इतना जानता हूँ कि एक इट्स अ हार्टफेल्ट स्टोरी ऑफ आवर टाइम्स, कि ये आज के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम फिल्म है। खासकर इस माहौल में ये फिल्म बहुत अहम है और मैं चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक ये फिल्म देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रोफेसर पर जो गुजरी थी इस फिल्म में, वो हम पर गुजर रही है। Exactly said that, yeah, it's very important to watch this film in these times particularly. Obviously, the film deals with intolerance at a different level for a sexual preference. Of course, facing intolerance at a lot of other levels at the moment. Is that why you see this film is important? Yes, it is important because it does not, the film does not just deal with a homophobic society or homosexuality. It is not about sexuality. It is about being denied your fundamental rights. And it is not, I mean, it is just increasing right now. It is becoming more and more brazen. And, as a filmmaker, I can only express through films. Obviously, we know that there's an environment of a lot of intolerance, even artistic intolerance. We've seen those filmmakers who on their walls. As an artistic person at the moment, how does this concern? Well, it concerns me because, an artist is all about free expression. If your expression is going to be slowly controlled, if it is going to be restricted, you will cease to become an artist. And I mean, arts and culture, I mean, they are mirrors to the times we live in. If my mirror is cracked, if my mirror is covered in black, I mean, what mirror will I hold? When do you see your film releasing in India for the Indian audiences? Very soon. I mean, my producers, Eros International, will be making an announcement very, very soon. Have you had any problems with the censor board, considering the subject? Well, we are yet to apply for certification, and I don't envisage. I mean, once you watch the film, you will realize that anybody of sound mind cannot have objections. Well, Mami has always had a slate of excellent films. It is India's premier film festival. But this year it is with even more conviction. The kind of films, the kind of guests that we have for the festival is amazing. It's on par with any world-class film festival. And the biggest thing, I mean, it's a moment of pride for me too, for my entire team, that an Indian film is opening this film festival, and it happens to be our film. So, thank you. Thank you. FTII के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बारे में आप कुछ कह सकते हो? FTII के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बारे में? प्रोटेस्ट खत्म हो गया, प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, स्ट्राइक खत्म हो गई है, उनके क्लासेस शुरू हुए हैं। अब मतलब उनको थोड़ा सा मतलब आप इतने दिनों को आपने याद नहीं किया तो उनको वो क्या करते? आप भूल गए थे उनको। अवार्ड्स लौटा रहे हैं। अब मतलब आप कहाँ से कहाँ फेस्टिवल का मज़ा लीजिए। Thank you so much, sir. Thank you. Up till the time when the Supreme Court has sent
the draft proposals for decriminalizing homosexuality to the 5-member Supreme Court bench. This is a topic that has divided opinions and very strongly worded ones at that. Religious leaders who don't shy away from creating controversies concur on this one topic where they all stand against this. I would now like to request the cast of this movie to introduce the movie to the audience. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Thank you very much for inviting us here and giving us a chance to talk about our film, a very dear film and very important film of our time. A film making itself is a very taxing process, not only for the director and the producer and the rest of the crew members, but also for the actors. At the end of the day, they have to be in the right state of mind to put the director's vision on the screen. I'm into this business since 93. Before that, I was very actively involved in theatre in Delhi. Always maintained that cinema acting is far more easier than acting in theatre. Theatre is an actor's medium, and you are left alone on the stage without anybody's help for one and a half, 2 hours. But there are few films who challenge your ability and capability and sometimes they make you doubt your own ability. And Aligarh is one of them. Aligarh is a story which appeared in the Professor Death. After he died, it appeared in some 3rd or 4th or 5th page. There were only 6-7 lines were written about his death and what exactly has happened. But Hansal Mehta, found this story through a stranger called Ishani and gave it to Apurva Asrani to write a screenplay on it. That was I would say, that step from Hansal Mehta was a very brave step, according to me. That he was thinking of making a film about a professor whose sexual orientation was completely different from us. A sexual orientation that is termed illegal and criminal in our country. This is about a story of a professor who is in love with his whiskey, who is in love with Lata Mangeshkar's songs, who is in love with poetry, literature, who is in love with Aligarh Muslim University, who is in love with teaching, and he loves the city Aligarh. But somewhere this city decided to put him inside the 4 walls of his room. Even then they were not happy. They barged into his room, they videographed him, his private business, inside his room, insulted him, humiliated him, and on that ground, university decided to suspend him from the job that he was in love with. And he was coaxed by the community and the NGOs to fight his case. He was a reluctant 64-year-old, you must have seen in the trailer, fragile old man. He wanted to spend the rest of his life in quietness of his flat. A pure soul, innocent man, filled with love, was persuaded
alone in the battlefield. Reluctantly, he fought his battle, won the case, and got his job back. But unfortunately, the night before him getting the letter from the court, he was found dead. Yes, it's a very serious story. It may sound, and it's a serious film, but made with lots of passion, lots of conviction from the director and the actors and the editor and the writers and the cameraman. And with that passion, we are here in Mithilbai College to talk about our film. We make films, or films we believe in, films that we think should survive in this country, films which create debate, apart from giving you a great story. Every time I go out and, when I'm mixing up with people, they're complaining about, sir, वो क्या है कि आप लोग नाच गाने करते रहते हो, कुछ मतलब होना चाहिए, आप लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते हो, आप मनोज जी जो है कुछ फिल्में करते हो फिर उस तरह की फिल्में बनती नहीं है. But here is a director. Here is a director who has put himself on the line to talk about something which is completely forbidden in our society. So now it's, and I strongly believe that all the heads which are sitting here, they can change the whole face of the country. They can change the face of the audience. And only for that reason I'm feeling so humbled that you guys have given us a chance to sit here and talk about an alternate storytelling. So with that hope and positivity, Hansal Mehta and his team, including myself, we are here to urge you to start talking about it and go to the theatre, because if you don't go to the theatre, these films will not be made. If you please watch Song and Dances. I don't have any problem. I feature in few to make money. But please encourage these films, this alternate storytelling, which is very, very important for a very healthy cinema viewing. And with that note, I would like to give it to Kumar, who is a very dear friend of mine, somebody who is very passionate and doing some great work that I'm very proud of him. He's been such a great co-actor in this very difficult film. He improved my performances in many sequences. So Kumar. Thank you, sir. Aligarh, he's already told you about the film, what the film is about. All I can say is it's one of the most finest films that I have worked in, and I'm really proud of it. And as he rightly said, we keep complaining that why don't we make films like what Hollywood does or what other international filmmakers they make. So this is a kind of film which you can be really proud of, and you can talk about which will take our Indian cinema to a different standard. But it all, as he said, it all depends on you as audience. If you won't go and watch such films, nobody will give us money to make such films. So now it's your chance to be proud of our cinema, and you can proud. When I go out to US or wherever UK, people say that they look down upon our cinema. They say you only sing and you only dance. What about the story? So there's a film, Aligarh, which has a beautiful story, lovely performances, beautifully directed and written. So I only hope that you all will go out and support and watch a film. Thank you. Okay, I'm here on a different mission. I want you to watch Aligarh, but before you watch Aligarh, I want you to make at least 100 people, each of you, go to the theatres and watch Aligarh.
I need you to volunteer. I've come here to ask you. See, when we make films like this, there's a huge struggle. You know, we have our films are the Aam Aadmi Party of Bollywood. You know, we struggle. You know, you will not see a single hoarding sign on the streets. You will not see posters stuck on the walls because we don't believe that we should be ruining our walls with those posters. And we play limited television promos. Our trailer has been certified A, adult, by the stupid censor board. So, you know, we need your support, and we need you to directly support us. You know, you see this hashtag come out. All those who are on social media, start using that hashtag in your Facebook, Twitter, Instagram posts. And please, you know, we are working on a campaign, correct? Yeah. We are working on a campaign where all of us are going to stand at different traffic signals with Aligarh posters for few hours, asking people to watch it when it releases on February the 26th. That's the only way we can publicize the film and have people go to the theatres, watch the film. So I've come here to ask for your support. I've come here with only one mission. You, and tell all your friends if they can support us. This young man here, Rahat, is in charge of enlisting volunteers. He works with Eros, the very generous producers of Aligarh. And we'll have a sign-up sheet for volunteers who would like to volunteer and stand at different prime locations of the city. So Yasira will help you with that after the session is done. Yeah, so I'm here to just appeal to all of you. We have to make cinema like this work. If you believe that Indian cinema has to flourish, and we have to talk about these stories, if you believe that whatever is happening in the country is wrong, come and support this film. Thank you. I think everything's been said, but I'll just say a little bit more. I think we are all in danger of becoming a society where they all want us to be the same. They want us to talk the same, they want us to worship the same, they want us to love the same, they want everybody to be uniform. And that's a very dangerous time for us, unless we exercise our choice to choose differently, to have some kind of diversity. Supporting someone who is gay, befriending someone who is gay, understanding someone who is gay doesn't make you gay. You know, it makes you compassionate, it makes you human. And the more different kind of people we have within our society, it's like a bouquet with different flowers. Or you'll just have ferns, or you'll just have roses, that's it. You know? So we are that kind of a society. And you need to come out and support endeavors like this, which celebrate that diversity. And I think Aligarh is an example of that. So do come and do support us. Thank you. I would like to request Mr. Harish here to tell us something about the role of cinema in his campaign for equal rights. I disagree with everyone. I don't think it's any one of theirs film, it's your film. And you should watch Aligarh because it's your film. And you should get more people to watch Aligarh because it's your film, it's your story. It's a story of someone within your college. It's a story of someone within your society. It's the story of someone in your country. So it is our story that's being told, so we should go and watch it. The second thing that I want to tell you is that cinema has always, I always say this, that a nation is only as good as the cinema it makes. And I personally believe that when you start making good cinema and when you start supporting good cinema is when societal mindsets will also change, because cinema has always been a reflection of society. So I urge all of you all to go and watch Aligarh. You will not become, I promise you that you will not become gay if you watch Aligarh. And if you are, you become more gay.
Like for instance, I never became straight when I watched Masti Zade. An A certificate for Aligarh is a slap on all our faces, because the censor board believes that you guys are not mature to watch a film like Aligarh. So it's a slap on your face, and the only way that you can reply to that slap is going and watching the film. The only way that you can support good films and good cinema and good storytelling is by going and watching this film, because in the end every film has to make money. And वो लोग तो otherwise it gets categorized as one of those niche films. मालूम है वो कभी कोई देखने नहीं जाता है, मगर it's a good film. So it's important that you should go and watch this film. This is your film, and for no other reason. Everything that everyone has said is all rubbish. You should watch it just because it's your film. Just because you believe in the film. You believe that your friend who is gay, who is bisexual, who is transgender, who is queer, should not be discriminated. So do I get a buy-in from all of y'all that you'll go and watch this film? Yes. And you will get your friends to watch this film? Yes. And that is what will fuel change in our society. You going and supporting this film. So how many of y'all are there on Twitter? Facebook? So after this, you all are going to use the word come out, and use the hashtag come out, because this is the hashtag festival. And you are going to write a post about the film, about the reason why you should watch the film, and that's it. That will fuel change in the society. And I promise you, you will not become gay if you support this film. Thank you. You rubbish everything, but I must say that he's right. Because 30 days of preparation and 35 days of shooting this role, I'm still straight. Hi everybody. What he just mentioned right now, I would like to give you a quick example of something which I faced recently without taking any name. I have been working on a subject for a regional film, and I approached an actor where she needs to play a sister to a brother who happens to be gay. The actor said that why can't we change? And why he has to be gay? Why my brother is gay? I said, then what's your problem? He said that no, if he's gay then people will think I'm also lesbian. I mean, we are living in a society where we don't even know what actually is homosexuality, or what is gay and what is lesbian, or what is bisexuality. So when I see a film like Aligarh, I understand the pain a director goes through. I'm sure Hansan Mehta had to kind of really convince Manoj to do this role, because all directors go through this pain. And not every actor comes forth to, because it's Manoj or Rajkumar who are, who believe in good cinema, alternate cinema, but we have seen that unfortunately mainstream Bollywood cinema has never come up with the issue in right sense. Thanks to Apurva for writing this screenplay, and thanks to all the actors who cooperated. I guess this is one of the first move of mainstream Bollywood cinema, and I tag this as a commercial mainstream Bollywood cinema, and I refuse that when they say that it's an alternate cinema, or please support, this is a small film. No, this is not a small film. This is a mainstream Bollywood film. It can make 100 crores. You can make it. And when it's a hashtag festival and you all go out and support a film like this can be a 100 crore film. And
And when you make it into a 100 crore film, then 100 other alternate films, good stories, which you can again go and watch it. So it's your investment for your future. Sorry for sounding like a salesman of yeah, but that's how good cinema will be promoted, and that's how all mainstream actors like Manoj and Kumar will probably do more alternate cinema, because as he kept saying in that I do commercial films because of money, or because we all go and watch them and make it into 100 crore films. So that's the catch-22. Why they're requesting you to watch Aligarh is because of that we can see better product, better content, and we can only make that change. So hashtag come out, hashtag festival, it's your responsibility. We'll be accepting questions from the audience. Would anybody like to ask any question? They inhabit some characteristics and then they get influenced for the role. So basically you are playing a homosexual character. So what was your research for that? How did you research on it? First of all, let me tell you, there is nothing called homosexual character. And there is nothing called heterosexual character. So let's have a clarity on this, because homosexuality or heterosexuality, they don't break or make a character. That's just a sexual orientation. We focused on the circumstances that Professor Sears was living in, his backstory, where he came from, which city he came from, what must have been his childhood, what must have been his relationship with his brother. His family was completely against him, so they disowned him, they didn't speak to him. His love, his vulnerable points. So you look at a character from every angle, and you note it down on a piece of paper or in your mind, and then you start working on it. What I have done, I don't look at, I keep observing people. I have a habit of mimicking people. But when you are approaching a role, you're trying to look at the role through yourself, through your own personality, through your own advantages and disadvantages. Each one of us has everything, every element. You just have to be very honest in looking at those elements and accepting it that yes, it's there, but the degrees may vary it. When I'm playing a very bad guy in Tevar, I'm focusing on that guy, somewhere I'm trying to find him inside myself. Yes, the degree is less, but I have to make it larger. I have to project it in a larger way. I try to understand characters through myself. So here we actually, he has given me an assistant director who was quite familiar with and passionate about Marathi poetry. And so we, along with him, I used to I created an atmosphere of poetry reading, reading novels, Marathi novels, trying to understand Marathi. And slowly in 10-15 days, the characters started coming, started becoming visible. You just have to create an atmosphere for the character, and the character starts welcoming you. It starts attracting you towards him. And this is the process I have applied for this, and it worked finally. Sometimes a process that you adopt doesn't work. Then you either you are confused or you are trying something else. So, but finding Professor Sears was that way very easy, because the process that we started with, it worked for it.
mimicking leads to mostly, I'm not sure about the mostly part, but okay, it does lead to a certain loss of identity. As a human being, I'm not very sure about the actor bit, but have you ascertained this loss of self-identity as maybe a human being, maybe not as an actor, but yeah, as your personal self? You mean to say, have I lost my own identity while playing the character? Yeah, in general, in your daily life. In daily life, see what happens that there are many characters. In Gulzar Saab says that all the characters, if you really play them seriously, they left a mark in your brain. Definitely, most of the actors who are taking their work very seriously, they're working in these kind of films. You'll find them very moody. Their moods, they have mood swings. Sometimes they are happy, sometimes they are just quiet. I think it also it creates a vacuum inside you because your mind is bruised so badly, playing so many various characters from theatre days till now. But you have to learn to, if you want to be sane. This is what my psychiatrist told me around 10-15 years back, that if you want to really remain sane, then you have to learn to switch off. And then I started working on it. I didn't know how to do it. I started working on it, and now I reached a point where after pack up, I just switch off. I like to unwind by say disturbing Hansal Mehta, knocking his door 50 times, or Rajkumar Rao, who doesn't even drink wine. I knock his doors so many times, but he's quite disturbing. He doesn't open the door. So like unwinding is very, very important. Find people from the unit, sit with them, talk something else. Unwinding, and switching it off, basically. Whatever you've done, just forget it. Now look for the next day. And the next day will only start when the morning starts. So I try to switch it off in such a way that and earlier it was not so easy. So I found a way of sitting with people, with the director, with co-actors, with the writer, with the editor, just sitting with them, chit-chatting, chatting about something else. It's quite taxing, yes. Whole day you are in the character. And if you don't do that, you will miss the sur. Sur samajhte hain? You will miss the sur for the next day. So you have to remain in the character. You have to be walking, eating like him. You have to keep thinking about it, keep rehearsing, without telling people that, see, you are so hardworking. No, you are not doing it for anybody. You are doing it for yourself. But at the end of the day, have a glass of wine, play music, dance, and that's what I do. And other video on demand platforms. So it is a video on demand platform on which you can stream the film live. But that will happen once the film is released and it is ready for release on Eros now. So no. I wish one day I could make films that go straight to Netflix and you can see it on your phones, on your laptops, on your iPads, and you will also pay for it. So that day has yet to come. The problem is we are used to getting all this content free. What do you have to say, any of you, what do you have to say about the portrayal of gay people in other mainstream Bollywood films, say Kal Ho Na Ho or Bol Bachchan, exaggeratedly effeminate? What do we say, what do we do when we watch films like that? I think we have this whole don't ask, don't tell policy at homes. So even if you have questions about your sexuality while you're growing up, there's nobody to answer it, especially in India. Because if you ever tell your mother that you have such feelings, it will be like all hell will break loose. I went through that.
You know, oh my God, you're never going to get married, you're not going to have children, it's the end of the world. You know, so the thing is, we keep it all bottled up. So when you bottle it up, you bottle up something that's your truth. What happens is it explodes. It comes out in ways that unplanned. You know. So how do you express it? You express it by ridiculing it. You express it by these sex comedies that came out recently, where there are gay characters, there are dry humping other men on daytime TV. So it comes out like that. Or in what do you say, Dostana. Where the two male characters, if they play gay, then they have to only talk like that, and everything has to be so exaggerated, and that means that they will hit on every man, and that's so not true. We're very similar, we mirror each other, heterosexual, homosexual people. We're not alien beings. I've been in a committed 9-year relationship. I don't hit on every man I meet. I don't cheat on my partner. I mean, it's down to your values, basically. So I feel like these portrayals have been happening because people are in closets of their own. The moment we can start coming out of our own closets, forget about announcing it to the world, being comfortable with our own selves, the portrayals start to change. And then what needs to happen is that people like yourself need to come out and support these portrayals, become part of this whole discourse. So then the characters will change. Either they're comic characters or even tragic, like My Brother Nikhil and even Aligarh to a certain extent. But it's all part of the process, I feel, So I think Kal Ho Na Ho was important. I think Dostana was important. It kind of brought the discourse out into the public. We said we don't want to laugh anymore, so Hansal Mehta and his team made Aligarh, and now you need to say, let's make them, completely, relationships that are mainstream, and let's watch comedies and love stories, and you'll see that as well. Thank you. I think the discourse about intercourse has to start now. And as I said, there will be comic portrayals, there would be funny portrayals, there would be people who will go and watch these films also. Okay, but in the end, I really wish that we come to a time when you have a film that has two protagonists, both of them are men, and both of them are in love with each other, and one is Hindu and another is Muslim. And they say, yaar, ye Hindu kyun hai, ye Muslim kyun hai? So I mean to say that this is only one of the many issues that we have, and it should become one of the many issues. As of now, it's like this LGBT issue, matlab ye log ko sex karne ka azadi chahiye. I mean, if really I want to, any one of us want to do something, it doesn't criminalize homosexuality. I'm gay and I'm out, he's gay and he's out, and we are not, no one can come and jail us because we are gay. The only thing that can happen is we are supposed to be gay, but we are not supposed to have sex. Okay, so, and that's only not for gay people, it's also for heterosexuals. They believe that only peno-vaginal sex is what is legal and everything else. But sex kiya to bacha hona mangta hai. Nahi to it's considered illegal. So, and you all guys know that that's not true. You have sex for recreation also, not just for procreation. Majority of the Indians with the orthodox mentality would not accept this film. So what problems did you face to get this film passed from the censor board? Or did you face any problem? Yeah, see, I don't believe the majority sees homosexuality as different. When Section 377 it was referred to the 5-judge bench, we were out at TV channels meeting people. We were traveling like we have come here today, and we found that the youth, the country, the people actually don't want this 377. They think it is regressive and it is repressive. But our establishment does not want us to think differently. They don't want to encourage dissent. See what is happening at JLU.
tomorrow they'll be in your campus. Remember that. So the people have to speak, and the censors fortunately have asked for cuts, some really silly cuts, and we are considering what to do. We have to in the next 2-3 days to decide whether to retain, whether to cut, or if they will give us another hearing. But they have not. They gave it an ace at the trailer. This trailer that you saw was given an adult certificate because it dealt with something that was considered unconstitutional because it was homosexuality. So that is the mindset of the censors. I wanted to ask. Yeah, well, it's a battle, but it's a good battle to fight. With this, we come to the end of the audience interaction. I would like to request the cast to take a selfie with the audience. ये जो इस जनरेशन के जो सारे एक्टर्स हैं, मनोज भी, राजकुमार भी, दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दोनों को गले लगाने को जी चाहा। फिल्म की कोई ऐसी पार्ट जो आपको रुला दी हो या बेदम जो आपको? मैं रोता नहीं हूँ फिल्म देखते वक्त, क्योंकि फिर आपकी ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। बाद में जब ख्याल आता है, लेकिन बहुत कई हिस्से ऐसे थे जिन्होंने दिल को बहुत गहराई से छुआ। मेरे आइडल रह चुके हैं नसीर साहब, और उनको देख के मैं सीखता हूँ। तो सर इसके बारे में क्या कहें? भाई अब ये उसका बड़प्पन है कि वो इस तरह की बात कहता है। मैं खुद उसका फ़ैन हूँ बहुत दिनों से, जब से बैंडेड क्वीन में उसने काम किया है। मैं उसको बहुत ही बेहतरीन एक्टर मानता हूँ, वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट। ऐसा भी सुना है कि पहले रोल वो आपको ऑफर हुआ था, फिर आपने मना कर दिया, तो उनको चांस मिला? कौन सा? जो बैंडेड क्वीन का? हाँ, वो बस मेरी बदनसीबी थी आपको लगता है कि और मनोज की खुशनसीबी। आपको लगता है कि आपकी वजह से उनको एक्टर का खिताब मिल पाया है? नहीं, मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी काबिलियत है। थैंक यू। Very rare film. It's a rare film. It's not merely a good film. सर राजकुमार और मनोज सर की एक्टिंग के बारे में बात करेंगे। मतलब again, see, it's a very difficult part,
and it's not easy to do this, and to give that एक हिंदी बोलो अंग्रेजी में बोलो, हाँ हिंदी बोलो, तो एक मुश्किल बारीक जो है ना पार्ट है इसमें, एक शख्स जो खुद अपनी एक उसके अंदर एक उथल पुथल है, उसको समझने की खुद कोशिश कर रहा है, और उस हैरान है कि दूसरे लोग एतराज कर रहे हैं उस पर। हैरानी को इतनी बेहतरीन तरीके से उसने निभाया है मनोज ने, बड़ा मुश्किल पार्ट है वो। उसके अंदर जो जज्बात हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो उसकी अंदरूनी हैं, जो उसकी हैं, जो उसकी निजी ज़िंदगी है, उस पर किसी को एतराज़ है, उसकी एक हैरानगी है। एक शख्स जो बहुत ज़हीन है, उसकी हैरानगी है, वो बहुत मुश्किल है और बहुत खूबसूरती से किया है। और जो राजकुमार की जो सिंपैथी है, जो एम्बिग्विटी है उसके पार्ट में, बहुत अच्छी है, बहुत दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। जो कहानी अपने आप में हीरो है और किसी भी अभिनेता को अगर ये रोल मिलता तो कितना चैलेंजिंग उसके लिए रहता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये बात, वही मैं कह रहा हूँ, कठिन है ये। अब अच्छा करते हैं बहुत, हिंदुस्तान में थोड़ा सा मतलब ज़रा सा अच्छा कर लिया तो बहुत तारीफ होती है। ये बहुत मुश्किल काम है, और उस मुश्किल काम को करना जो है वो इतनी ग्रेस के साथ और इतनी समझ के साथ और बगैर घबराए उसको पूरी तरह से अंत तक ले जाना, उससे कहीं हटना नहीं। एक बार जब उस रास्ते पे चले तो उसको पूरी तरह से उसको निभाना अंत तक, उस आदमी की जो एक सेंसिटिविटी है उसको निभाना, ये बहुत बहुत मुश्किल था और बहुत खूबसूरती से निभाया है। मतलब पार्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर उसको निभाना वो एक अलग जद्दोजहद है इस तरह की फिल्म। और ये मनोज ने बहुत, और मनोज आजकल बहुत जो उसका मैं देख रहा हूँ, तांडव भी देखा मैंने, शॉर्ट फिल्म भी देखी, वो किसी एक हमेशा ही बहुत अच्छा एक्टर था। आज कुछ और जो अपने एक होता ना कि हर प्लेयर का, हर एक्टर का एक पीक पॉइंट होता है, जब वो अपने सबसे पीक पे होता है, वो मनोज का वो फेज़ है जहाँ वो हर तरह से बगैर घबराए एक जो पार्ट है उसको बहुत अंदरूनी तरीके से समझ के स्क्रिप्ट में पूरा तरह से अंदर होके जिस तरह से निभा रहा है, वो बहुत 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 ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा इसको मार्क्स दूंगा। कौन सा वो मूवमेंट था जब आपको लगा कि इस फिल्म दम और ये बहुत आगे निकलने वाली, कोई एक सीन आपको याद आता है जो बहुत ज़्यादा उम्दा रहा हो, आपको लगता है कि नहीं सारे हैं, मतलब कोर्ट में बैठा है, उसके बारे में बात हो रही है, ये डिस्कशन हो रहा है, वो इस तरह का इंसान है जो अपनी किसी बात को सेंसेशनलाइज करना ही नहीं चाह रहा है। वो उसकी ज़िंदगी है, वो उसकी समझ है, उसको जिस तरह से निभा रहा है कोर्ट में बैठा हुआ एक एक्टर, जहां अपेरेंटली वो कुछ नहीं कर रहा और कितना कुछ कर रहा है ना करते हुए, जब पीछे आप बैकग्राउंड में बैठे हो और आपके अंदर की आप जो उसकी जद्दोजहद है, जो उसकी परेशानी है, जो उसका बौखलाहट है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, उसको इतनी बारीकी से निभाना, उस स्क्रिप्ट में भी वैसे ही है और अदाकारी में भी वैसे। हाँ, मैं एक्चुअली फिल्म से इतनी खूबसूरत अच्छी फिल्म देखने के बाद एकदम से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज द इफेक्ट इट हैज़ ऑन यू। तो मैं जब बाहर निकला था थोड़ा आई वाज जस्ट नम, एंड स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल एंड सैड, एंड सो मुझे थोड़ा जोक करना पड़ा अपने आप को बाहर निकालने के लिए। इट्स ग्रेट परफॉर्मेंस। हंसल सर हैज ऑलवेज गिवन ग्रेट फिल्म्स, शायद, but this is special. I think this is, for me, it's one of his best films. And राजकुमार मेरे दोस्त भी हैं, उनके साथ फिल्म भी कर चुका हूँ। I think राजकुमार is just terrific. इस फिल्म में बहुत amazing काम किया उन्होंने। And जैसे कि आपने देखा, मैं मजाक में नहीं, बहुत सीरियसली मनोज सर का हाथ अपने सर पे रखा है। मैंने कहा आप सर पे हाथ रख दो, आई थिंक मैं अच्छा एक्टर बन जाऊँगा। आई थिंक इज डन अ ग्रेट जॉब। जो कैरेक्टर
जिस तरह उन्होंने निभाया है और जो nuances लेके आए हैं. I think he's such a cute professor. You know, like I think all the young girls are going to fall in love with him. All the young people and बहुत अच्छी फिल्म है. And it takes a lot of courage for a director to treat such a sensitive issue. जो especially हमारे देश में इसको लेके अभी बहुत ही you know, we are kind of in a limo. People are still, we're still not ready to address and accept this. So I think this is a great film at a great time. I hope people watch this film. I request everyone to go and watch this film. It is a beautiful film, and I think such films should get all the love and support which I think they need. And that's it. मेरे लिए मैं जब पिक्चर रिलीज होगी, I think मैं एक बार हॉल में जाके फिर से देखूँगा. यार इतनी बेहतरीन फिल्म है कि इस तरह के ख्याल जहन में नहीं आते. एंड राजकुमार मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं एंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. सो मैं तो इनफैक्ट जब भी उनको स्क्रीन पर देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ राजकुमार का एज एन एक्टर. सो ये ख्याल नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट फिल्म है. आप इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएंगे. एंड कभी अगर होती है तो फिर ज़रूर हम लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हैं. बट इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल डिफरेंट है. यू नो, आप ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है. एवरी फ्रेम, हर फ्रेम इस फिल्म का, हर लाइन, हर शॉट, ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है. आई जस्ट होप आप सब जाइए ये पिक्चर देखिए. हाँ, ये सब बात नहीं. हाँ, अरे कोई अच्छी आप कभी अच्छी फिल्म देखते हैं इस तरह का असर होता है आप पे. बहुत कम फिल्में होती हैं जब इस तरह आपको असर करती हैं और वो सच होता है. मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, वो बड़ी अच्छी फिल्म है. यू नो मीन. सो इसका सबूत ये है कि मैं आपसे सही से बात नहीं कर पा रहा. ये इस बात का सबूत है कि मुझे इस फिल्म ने बहुत छुआ है और आशा करता हूँ कि लोग देखें इस फिल्म को. एंड यू नो, दैट्स ऑल वी कैन डू. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. Yes, it's an amazing film. It's very inspiring, and I think it speaks about a very important constitutional issue in India. So everybody go and watch Aligarh on the 26th of February 2016. Or even 27th will do. Oh yeah. Anytime that weekend. सर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी सभी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मनोज सर को लेकर? No, I'm very humble. You know, it's overwhelming the kind of reaction our film is getting. And today Nasir Saab saw it, Govind sir saw it, some really very inspiring figures, you know, the stalwarts saw our film, and they really liked the film. They appreciated everyone's performance, and they were very moved. I could see it on their faces. So it's very overwhelming. जब आपने खुद अपनी ये फिल्म देखी तो आपको लगा कभी भी कुछ कमी रहेगी जो आपके दिल में हो, या फिर वो तो हमेशा लगता है. इसलिए मैं ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो हर फिल्म के बाद लगता है कि ये थोड़ा मिस हो गया, या यहाँ पे ये ऐसा उस वक्त पता होता तो ये मोमेंट ऐसा बन सकता था. तो आपके क्या अपने रिएक्शन होते हैं या आप लोगों के रिएक्शन देखते हैं? नहीं, अपने ही. सबसे पहले जब आप देखते हैं तो आप अपने खुद ही सेल्फ क्रिटिक होते हैं. आप सबसे पहले क्रिटिसिज्म आपके अंदर से ही आता है. तो वो करते हुए आपने उस चीज़ को एनालाइज कभी नहीं कर पाते हैं आप? नहीं, वो कई बार मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस मोमेंट पे शायद आपको नहीं समझ आ रही होती हैं, और क्योंकि आप थोड़ा एक जोन में होते हैं, एक मेंटली एक मेंटल स्टेट में होते हैं, तो इस वजह से. आपने जब अपनी फिल्म देखी जो अलीगढ़, तो किस तरह का आपका रिएक्शन रहा था? फिल्म आपको फिल्म का जो पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट बहुत बेहद पसंद आया? मुझे पूरी फिल्म बेहद पसंद है, और ये जैसा कि पल्लवी बता रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है ये सब हमारी सोसाइटी में आज है, ऐसा हो रहा है, बस ये कि कोई इसके बारे में बात नहीं करता है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आएँ बाहर, अलीगढ़ देखें, और जो एक सच है उसको जितनी सच्चाई से दिखाया गया है उसको आके देखें. काफ़ी रियलिस्टिक आप रोल करते नजर आ रहे हैं. फिल्म आपने शायद किया, फिर अभी अलीगढ़ आप करके नजर आ रहे हैं, तो मतलब माना जाए कि मतलब यही आप रोल करके नजर आएंगे? कुछ नहीं, देखिए, जिस दिन एलियन का रोल मिलेगा उस दिन मैं एलियन का रोल भी कर लूँगा. अभी तो क्योंकि इंसानों का रोल मिल रहा है तो इंसान तो रियल ही होते हैं, तो इसलिए रियल रोल कर लेते हैं. कॉमेडी काफ़ी आजकल चले जा रही है, तो कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो ज़रूर, क्यों नहीं. बिल्कुल. जानना चाहेंगे आपसे कि आप कितना इंटरेक्ट हुए डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से या फिर मनोज सर से, कुछ पूछते हैं उनसे इस चीज़ को अपने से करूँ? नहीं, ऑफकोर्स विदाउट डायरेक्टर तो कैसे होगा, क्योंकि हंसा सर के साथ तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग भी है बहुत अच्छी. उनके साथ तो मैं हमेशा बहुत डिस्कस करता हूँ कि एक रोल को मैं कैसे देख रहा हूँ और वो कैसे देख रहे हैं, तो हम दोनों का सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है. और हंसा सर ऐसे डायरेक्टर हैं कि वो बहुत फ्रीडम देते हैं एज एन एक्टर आपको. वो पहले आपको खुद ही एक्सप्लोर करने देते हैं, और उनको लगता है कहीं कुछ गलत जा रहा है तो ही इज़ ऑलवेज देयर.
आप स्क्रिप्ट के हिसाब से जाते हैं या आपकी visualization मुझे एक बात पूछते हैं, आप हमेशा मुझसे इतने सारे एक्टिंग के क्वेश्चन क्यों पूछते हो? आपको एक्टर बनना है, ज़रूर आपको एक्टर बनना है। क्योंकि आप लास्ट टाइम भी बहुत ही एक्टिंग के सवाल करते हैं मुझे, सिर्फ एकदम बारीकी से। क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें कर देते हैं, इसलिए वो देख के थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है आपका व्यूअर होता है, इसीलिए उसको थोड़ा रिवील कर दें, जो स्ट्रगलर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो उनको सीखने को मिले, नहीं समझ सकें, इसलिए मैं कह रहा था कि अपनी क्या प्रिपरेशन रहती है, दिमाग में क्या चल रहा है? मेरी कैरेक्टर की प्रिपरेशन रहती है, मेरे दिमाग में कुछ प्लान नहीं होता है कि मैं आज ऐसे करूँगा, इस सीन को मैं वैसे करूँगा। मैं अपना कैरेक्टर को तैयार करता हूँ बहुत अच्छे से, उसके बाद सेट पे जाके मुझे पता लगता है कि आज हम ये सीन कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मैं बस वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। जब कैमरा एक्शन बोला जाता है तो मैं बस उस मोमेंट पे रिएक्ट करता हूँ, जैसा कि मेरे कैरेक्टर को, मेरे किरदार को करना चाहिए। Everybody loves you, love your acting. आप इसको अपना आइडल समझते हैं, ये बंदा कुछ ऐसा है, कुछ मैं ऐसा करता हूँ। नहीं, इंडिया में तो बहुत है, इंडिया में तो ऑफकोर्स मनोज सर हैं, इरफान सर हैं, मनोज सर इरफान सर तो बहुत दोनों स्टॉलवर्ड्स हैं इस जनरेशन के। फिर नवाज हैं, रणबीर ने बहुत अच्छा काम किया बाजीराव मस्तानी में, रणबीर है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं। सर आपके कैरेक्टर को लेकर, जैसे कि मनोज सर ने कहा था कि अगर मैं अपने कैरेक्टर को लेकर अगर मैं आपको को पढ़ लूँ तो मैं पूरा कैरेक्टर कर लूँ, तो आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको बहुत कटिंग लगा हो करते वक्त? मेरा सिटी लाइट्स का कैरेक्टर आई थिंक बहुत टफ रहा था मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि बहुत ही इंटरनल कैरेक्टर था, वो ज़्यादा बात नहीं करता है और ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो मैंने ऐसे पर्सनली कभी नहीं देखे, तो मेरे लिए एक बहुत ही अनफेमिलियर टेरिटरी थी जिसको मुझे एक्सप्लोर करना था और एक मैच्योर परफॉर्मेंस था, तो वो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा। थैंक यू। और नसीर साहब को देख देख करके हमने सीखा है, और वो पुरी साहब को, और नसीर साहब को मैंने इनवाइट किया था कि आप आइए फिल्म देखिए। नसीर साहब से वैसे भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, और इस बार जब मैंने बोला तो उन्होंने उन्होंने कहा कि वो बहुत दिनों से सोच रहे थे फिल्म देखने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने जो है मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, और जाहिर सी बात है ये फिल्म हिलाती है, तो अभी वो कुछ बोलने की स्थिति में ज़्यादा थे नहीं, कल बात करेंगे फिर उनसे। सर आप बहुत ही ग्रेट एक्टर, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे जैसे किस तरह आप एक कैरेक्टर की अपने को अपने कैरेक्टर में आप किस तरह डालते हैं? देखिए बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊंगा अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई सालों की मेहनत है, कई सालों का क्राफ्ट है जो तैयार किया हुआ है। थिएटर फिर सिनेमा में इतने साल हो गए, लेकिन इतना है कि 15-20 दिन 25 दिन लगते हैं अगर शिद्दत से तैयारी करो किसी रोल में कोई ईमानदारी से करने के लिए। और जो जिस तरह का कैरेक्टर ये बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर है, अगर इसके साथ थोड़ी सी भी बेईमानी होती तो ये कैरेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता मैं। सर जब आप ये कैरेक्टर निभा रहे थे, वो पर्सन आपके अंदर आ चुका था, तो क्या वो पर्सन आप घर भी लेके जाते थे? नहीं, मैं तो बरेली में था, शूटिंग कर रहा था। शूटिंग के बाद मैं कोशिश यही करता था कि मैं कुछ लोगों के साथ बैठूं, अलग बातें करूं, स्विच ऑफ करूं सब चीज़ों को, फिर अगले दिन सुबह जब उठता था तो फिर से उसी मूड में फिर तैयारी उस दिन के सीन की, ऐसे ही मतलब इस तरह से करके 30-35 दिन गुजारे थे। फिर बॉम्बे में कुछ शूटिंग की हमने 4-5 दिन की, फिर फिल्म ख़त्म हुई थी। सर स्क्रीनिंग पे सभी नजर आए, लेकिन आपके कर भी तो अनुराग कश्यप भी नजर नहीं आ रहा। अनुराग कश्यप को मैंने पिछली भी स्क्रीनिंग में के लिए बोला था उनको, तो काफ़ी बिजी चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अगली फिल्म की एडिटिंग चल रही है, और अमूमन अनुराग कश्यप जो हैं जब अपनी फिल्म में बिजी होते हैं तो जल्दी कहीं जाते नहीं, आप कहीं भी जल्दी देखेंगे नहीं आप उनको। लेकिन मैं उनको दिखाना चाहूँगा, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे बहुत क्लोज़ हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने एक अभी मिला भी था तो उनसे कहा था कि जब भी आप खाली हो तो बता दीजिए, हम दिखाएंगे आपको। फिल्म सर काफ़ी हिट होने वाली देख के ऐसा तो पता नहीं, लेकिन फिर भी इतने प्रिपरेशन किए आपने, इतनी बेहतरीन फिल्म नजर आ रही है, फिल्म को लेकर कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा, जैसे नेशनल अवार्ड। नहीं देखिए क्या है कि आप एक्सपेक्टेशन को लेकर के कभी काम नहीं करो। इतने साल काम करने के बाद एक निष्कर्ष में मैं पहुँचा हूँ, एक नतीजे पर पहुँचा हूँ कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप किसी और काम में लग जाइए, क्योंकि फिल्म की अपनी जर्नी होती है, फिल्म अपनी जर्नी तय करती है, और जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें कभी भी जाना जो है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी निर्देशक के लिए बेवकूफ़ी है, क्योंकि अवार्ड्स के अपने मापदंड होते हैं, अपने जूरी मेंबर्स होते हैं, उनका दिमाग होता है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से सराहना मिल जाए, फिल्म को इज्जत मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तैयारी होती है एक किरदार को लेकर, तो क्या सपनों में आ जाता है? सपनों में तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आता ही रहता है वो, और बहुत ज़्यादा आता है। कोई एक सपना जो शेयर करना चाहेंगे, यार मैं उस दिन ऐसा मुझे सपना मिला है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं ऐसा इस तरह से कभी, देखिए सपना जो है अगले दिन आप भूल जाते हैं, लेकिन हाँ आपको किरदार जो है परेशान तो करता ही है जब तक आप उस रोल को निभा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं। अभी उसके बाद मैंने एक फिल्म और कर ली,
तो सारी चीज़ें चली गई हैं। अब फिर प्रमोशन का समय है, फिर से इसके बारे में बात करने का समय है, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इस एक कमाल की फ़िल्म को देखें जो हंसल मेहता ने बनाई है। एक बड़ा ब्रेव कदम है, एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है और एक कमाल की अनोखी फिल्म बनी है। आए देखें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें और इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा दें। मनोज सर, जानना चाहेंगे कि ये तो एक फिल्म थी जी, लेकिन ये एक सच्ची घटना भी है जी। कितनी सिंपैथी है आपको उस आदमी से? वो कितनी सिंपैथी और कितनी मैं इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरे अगर परफॉर्मेंस में दिख जाए तो मेरे परफॉर्मेंस की जो है सक्सेस होगी। और अभी तक जो रिस्पांस आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट कि मैंने उस महान आत्मा को एक श्रद्धांजलि दी है अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए। आप सोचते हैं काश आप उनसे मिल पाते? काश कि वो समाज उनको मरने नहीं देता। हम सब दोषी हैं उनकी मौत के लिए। सर, मतलब आप मानते हैं कि मतलब उनके साथ गलत हुआ है? बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक है सर। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आप शूट करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, अभी तो सातों चक्के है रिलीज़ पे, फिर उसके बाद मिसिंग जो मैंने नीरज पांडे के साथ को प्रोड्यूस किया वो है, उसके बाद दुरंतो है। तो ये सब फिल्में रिलीज़ होती रहेंगी। अभी मैं काम बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी 3-4 फिल्में हैं जो रिलीज़ में हैं। इसमें से 2 फिल्में रिलीज़ हो जाएं, फिर उसके बाद मैंने डेट्स दिए हुए हैं आगे के काम के लिए। सर, कोई एक प्रोजेक्ट जो आप खुद बनाना चाहें अपने लिए है? आप कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग में चल रही है या आपके एक्सपीरियंसेस पे कोई कहानी जो आप बनाना चाहें अपने लिए? मैं एक्टर आदमी हूँ, मैं हमेशा ओपन रखता हूँ आगे के ऑफ़र के लिए। तो तांडव जिसने बनाई थी, तांडव जो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है और काफ़ी चर्चा हो रही है जिसकी, उसके डायरेक्टर के साथ मैं अगली फिल्म करने वाला हूँ। कब होगी वो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर वो फिल्म होगी। थैंक यू सर। दादा, जानना चाहेंगे अलीगढ़ फिल्म के रिव्यूज आपसे, आपको कैसे लगे? रिव्यू क्या दूँ? इट वॉज एन एक्सपीरियंस। आई मीन ऐसा कुछ हुआ हमारे देश में, बड़ी इट्स ह्यूमन स्टोरी, इंसानी कहानी है जो किसी के साथ, मेरे साथ, किसी के भी साथ, किसी को भी वो छू देगी। रिव्यू तो ये है कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं और फिल्म देख के मैं काफ़ी देर चुप रहा, सोचता रहा कि ऐसा भी हुआ है। इट रियली इट्स अ फिल्म दैट रेजेस अ क्वेश्चन, अ वेरी बिग क्वेश्चन। डोंट यू थिंक कि अगर यही कहानी एक इमेजिनरी होती तो इतना प्यारा एक समान ना बांध की जाती? देखिए, इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी वो है जो आपको, जब आप उससे वाकिफ़ होते हैं, अपने सामने आप रियलिटी को एकदम सामने देखते हैं तो आपके अंदर कुछ और रिएक्शन होता है। इमेजिनेशन में क्या हो सकता था मुझे नहीं पता, रियलिटी में क्या है जब मैंने वो चीज़ मेरे सामने आई, मैं खुद स्टंट था, हम लोग सब बैठे थे एंड लाइक अच्छा ऐसा हुआ। मतलब अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड होप एंड इट वाज रियली 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 इमोशनल। कौन सा वो मोमेंट था जब आप बिल्कुल मेस्मराइज हो गए और आपको लगा कि आई मीन ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स हैं, स्पेशली द क्लाइमैक्स जहाँ से फिल्म एंड की तरफ मुड़ती है, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। आई मीन आई वुड नॉट लाइक टू रिवील इट राइट नाउ, अब रिलीज होने वाली है तो लेट पीपल सी एंड एक्सपीरियंस दैट, बिकॉज वो मोमेंट ही ज़िंदगी है। कितनी सिंपैथी है आपकी इन जो रियल कैरेक्टर्स रहे थे आपके साथ? ये सिंपैथी क्या है, सिंपैथी नहीं बोलूँगा, मतलब मुझे गर्व है इन लोगों के जो लड़े, जो उनके साथ वो बहुत बुरा है। मतलब सैल्यूट टू सच पीपल हु ट्राइड एवरीथिंग, डिड एवरीथिंग। जिनका मकसद नहीं था किसी को हानि पहुंचाना, इनका मकसद था खुद जीना। मतलब मैं खुद जीना चाहता हूँ, मेरा मकसद नहीं किसी को हानि पहुंचाना, तो मतलब मेरे साथ क्यों गलत हो। तो अपनी जो भारतीय संस्कृति है, जो हम जैसे हम लोग जैसे हमारा इंडिया है, किसी का दर्द किसी का मज़ा बन जाता है। जैसे किसी ने झेला है तो कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है, तो कितना सही है उन चीज़ों को उछालना। देखिए, ये तो दुनिया है, ये दुनिया है। कोई अगर नॉनवेज खाता है तो उसके लिए एक नॉनवेज एक जानवर कटता भी है, तो ये इंसानी चीज़ है। ये हमारी भारतीय संस्कृति या अमेरिकन या ब्रिट ऐसा कुछ नहीं मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ इंसानी चीज़ है, तो इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, रहेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जब कोई किसी को प्ले करता है कुछ करने के लिए, कोई किसी का somebody set somebody up to get something done, that is where the problem is. नो डाउट कि ये फिल्म बेहतरीन है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप इस फिल्म को डायरेक्ट करते क्या अलग समा रहता है या कुछ अलग आप करते हैं, या फिर आपको लगता है कि वहाँ थोड़ी कमी रहेगी कुछ ऐसा? नहीं, आई थिंक इतनी ब्रिलियंट फिल्म है, फर्स्ट फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक
बधा रहा, मतलब इसके अंदर एक, मैं वही कह रहा था पूर्व से और मनोज सर से, एक ऐसी रिदम है जो आपको बांध के रखती है, टोटली इंगेज्ड, आप उस फिल्म का हिस्सा बन जाते हो, आप देख रहे हो आपके सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपके ऊपर होगा तो आप भी नहीं एक्सेप्ट करोगे, सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ऐसा कमी तो दूर की बात है, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा जिसकी हमें ज़रूरत है, हमारे इस देश को ज़रूरत है। आपके प्रोजेक्ट्स कब आने वाले हैं, आपका डायरेक्शन कब दिख पाएंगे? सर मैं एक आध कुछ छोटी सी फिल्में कर रहा हूँ जैसी मैं करता हूँ, और उसके बाद इस साल फीचर फिल्म है, मैं काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही कुछ मूव होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। हमारी टीम मुझे आपसे इंटरेक्ट करता है और आपसे पूछता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कुछ बढ़िया निकल के आए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आप इस तरह की फिल्मों को और आगे लेके जाइए, लेट पीपल सी, लेट पीपल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। आई थिंक मनोज बाजपेयी बेस्ट परफॉर्मेंस है एवर, तो अभी हिला हुआ हूँ मैं बात करूँगा। अच्छा, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, राजकुमार की बात, सबने अच्छा काम किया। एक फिल्म, अभी ये फिल्म थोड़ा अलग, मैं बाद में बात करूँगा। मनोज बाजपेयी जिस लेवल पे जा चुके हैं इस पिक्चर में, वो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस है दोनों की, सारे एक्टर्स की। बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चीज़ आप फील कर पा रहे हैं? आप फिल्म देखिए, आप समझ रहे हो, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, और हर उस आदमी को जो मोरालिटी का झंडा लेके घूमता रहता है इस देश में, सबको देखना। अनुराग सर, आप बहुत कम मिलते हैं हमें, व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दीस डेज? मनोज सर तो अच्छे एक्टर हैं, बट इस फिल्म में आई थिंक वो कहीं और ही पहुंच गए, कहीं और ही पहुंच गए। जैसे आप बता रहे थे कि एक्टिंग क्लासेस आप जाएंगे, तो अप्रोच करेंगे आप अभी मनोज जी को? मनोज सर के पास इसके बाद टाइम नहीं होगा, बट ही इज़ टू गुड। आई नो हिम फॉर 15 years। मैं जब बहुत मोटा था, हम साथ में वर्कआउट करते थे बाबे रेन में, तो मैं वही कह रहा था कि सर आई थिंक इस बार जिम के लिए नहीं, इस बार एक्टिंग क्लासेस के लिए आपके पास आना पड़ेगा। एंड जैसा आपने बताया, रियलिस्टिक सिनेमा आजकल बॉलीवुड में एक ट्रेंड चला है, तो कैन वी आल्सो सी यू बीइंग पार्ट ऑफ वन सच फिल्म? आई वुड लव टू बी अ पार्ट, किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी प्रोड्यूसर को, या यू नो कहाँ जिन्हें भी लगे कि मैं फिट होता हूँ एंड आई डिजर्व द रोल, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म्स लाइक दिस एंड बी एबल टू डिपेक्ट अ कैरेक्टर लाइक दिस। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया है फिल्म, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत अच्छी बनाई है,
और सबके काम बहुत अच्छे हैं, मनोज और राजकुमार और सभी के काम बहुत ही मतलब इट्स अ फिल्म यू हैव टू गो वॉच इट ऑन इन स्क्रीन। इन कलाकारों ने पहले भी ये काम किया हुआ है, तो आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं कहानी मेन सॉरी कहानी ऑफ कोर्स कहानी तो है ही बहुत बड़ा पार्ट, पर डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स, एवरीबॉडी दे मेड सच अ गुड फिल्म। कहानी है वो पोर्ट्रे करना, वो हमारे तक पहुंचाना, किस तरीके से पहुंचाई गई है कहानी, वो बहुत ही मायने रखती है चीज़। नेशनल अवार्ड दिया जाएगा कल? वो मुझे पता नहीं, पर फिल्म देखिए आप जरूर। आपकी मांझी फिल्म भी कब फिल्म? The film is great. Rajkumar Rao is definitely one of my favorite actors. Everyone's going to Hollywood right now, and I think he should be the next one, actually. Any best part of the film you like the most? I like the acting. It was actually the least commercial Bollywood type film that I've seen lately, and I appreciate that. I really appreciate really good acting. So it's kind of a heavy subject, so you kind of leave with a heavy heart, but a lot of hope and inspiration for the future. Did you cry in the film? I didn't cry in the film. It's been a rough day, so I kind of got that out of my system, but it definitely touches you. It's it's an ongoing problem, not just in India, but all over the world. People are fighting for their rights. So do you support Section 377? I do. I have a lot of friends. I'm from Los Angeles, and I have a lot of homosexual friends, and I come from the arts, and I believe everyone has the right to their own preference. I do. बॉस ऐसा है ना, मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सब लोग ये फिल्म देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है और कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस है इसके अंदर जो आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा। मनोज इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, राजकुमार इज़ वेरी गुड इन द फिल्म, और हंसल ने जिस तरह से इसको ट्रीट किया है अभी तक, मतलब आई एम इन द सेम फेज ऑफ द फिल्म। और मैं चाहूँगा कि जितने दर्शक अगर आपको अच्छी सिनेमा देखनी है तो प्लीज़ आकर देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी सब तो आप देखते हैं, तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। सर ऐसी स्क्रिप्ट बहुत कम लिखी जाती है, तो कितना बड़ा दोष है राइटर्स का कि कुछ भी लिख देते हैं वो बन जाता है। देखो ऐसा है ना कि ये मैंने कहा कि ऐसी फिल्म बड़ी रेयरली बनती है, तो ये मौका है, आप लोग इसको गवाइए हमका मत, आप प्लीज़ आके देखिएगा। आई वाज वेरी मूव्ड बाय सीइंग दिस फिल्म एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, प्लीज़ आके देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
रिस्पांस मिला है? नहीं अच्छा, देखिए स्माइल इस बात की है कि सारे दोस्त आए थे देखने के लिए और आज सबको अच्छी लगती है, तो अच्छा लगता है कि अपने दोस्तों को जो है निराश नहीं किया, इस बात की स्माइल रहती है। और अच्छी बात ये भी, अभी हम लोग शो के बाद अभी हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। कई दिन से, कई रातों से जो है हम लगातार काम कर रहे हैं और एक ऐसी फिल्म को जिसमें हमारा विश्वास है उसको जितने लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को बता सकें इस फिल्म के बारे में, ये कोशिश है। बस 2-3 दिन की और कोशिश और करनी है, जिसको लेकर खुश है कि कोई यूनिट साथ में है, सब लोग इतने दिन से साथ में काम कर रहे हैं और अब हम साथ में हम दिल्ली जा रहे हैं। इसके बाद फिर फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, दर्शकों का इंतज़ार रहेगा कि वो उस फिल्म को आके पूरे तादाद में देखें और जैसा भी है एक अच्छी फिल्म है और हमें बहुत गर्व है इस फिल्म पे। क्योंकि सर जितने आपके मित्रगण हैं सबके सब आपकी सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप पहले से तैयार थे, आपको इतनी तारीफ मिल चुकी है कि तारीफ का असर होता नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप हर शो जो होता है उसमें अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग सोच के लोग आते हैं और किसका क्या रिएक्शन होगा ये पता नहीं होता है। तो ये और सबके सब समझदार हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस है। तो हर जो आदमी आकर के आपसे बात करता है उसकी एक सोच होती है, उसकी अपनी एक राय होती है और वो राय देता है, हम सुनते हैं उसको। इसमें हर चीज़ जो है अच्छी नहीं होती है, कई बार एक आध चीज़ जो है वो बोलते हैं जो उनको ठीक नहीं लगी या उससे उनको एतराज़ है या वो उससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी चीज़ होती है, हम उसको मान लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सर इतनी प्रेज मिली है, कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ है, कुछ आपको ऐसा बोला है? अभी तक क्रिटिसिज्म हुआ नहीं है और दुआ यही करते हैं कि सबको अच्छी लगे और सारे दर्शक देखें और इसको सराहें। प्रोफेसर सीरस जो थे इस दुनिया में थे और उनकी ज़िंदगी पे ये फिल्म बनाई गई है, उनकी यात्रा को हमने ये श्रद्धांजलि दी है और आशा करते हैं कि सारे दर्शक जो है उनके इस पूरे जीवन को सराहेंगे। सर क्या लगता है अलीगढ़ के बाद एक नया कंपटीशन शुरू हो जाएगा सिनेमा में या फिर एक नया दौर शुरू हो जाएगा? नहीं, अलीगढ़ से हम यही उम्मीद करते हैं कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें ताकि इस तरह की फिल्में ज़्यादा बनें और जितनी कहानी प्रधान फिल्में बनेंगी उतना इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। मनोज जी कह सकते हैं आप हर एक फिल्म के साथ अपना ही स्टैंडर्ड आप बढ़ा रहे हैं, अपने लिए आप एक कंपटीशन बढ़ा रहे हैं? देखिए वो हर एक्टर के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप कंपटीशन अपने काम से अपने आप से करें। पिछला जो काम किया है आपने उससे आगे आपका विकास हो, आगे आप अच्छे एक्टर बने और आगे भी मेरी यही इच्छा रहेगी कि मैंने जो काम किया है अलीगढ़ में, इससे जो सीखा है उससे मैं और आगे की तरफ और अच्छा बनने की कोशिश करूँ। राजकुमार सर के साथ आपने काम किया फिल्म में, क्या लगता है आपके बाद सिनेमा में राजकुमार सर आपकी जगह ले सकते हैं? राजकुमार सर बहुत सारे लोगों की जगह ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं और मैं छोटा एक्टर हूँ इस मामले में, लेकिन वो बहुत ही काबिल इंसान है और बहुत ही काबिल अभिनेता है। मतलब सर जब आप कभी भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो पहले एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ये हिट होगी, सुपर हिट होगी? नहीं, हिट सुपर हिट तो बड़े से बड़े दिग्गज को पता नहीं चल पाया इस इंडस्ट्री के इतिहास में। तो कैसे करते हैं स्क्रिप्ट? नहीं, चयन आप करते हैं सिर्फ इसलिए कि कहानी आपको अच्छी लग रही कि नहीं, किरदार आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उस पर आप चयन करते हैं। जी, अब जो क्या ना एक शॉर्ट फिल्म आई अपनी तांडव, वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा व्यूवर्स हैं उसके। जी, तो उसको आप उस कहानी को आपने कैसे चुना? कुछ नहीं, वो देवाशीष मखीजा हैं, उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ मैं। उन्होंने जब तक फिल्म हो नहीं रही थी तब तक उन्होंने सोचा कि चल करके एक शॉर्ट फिल्म ही कर लेते हैं। बहुत इंतज़ार कर लिया था हमने, अब उस फिल्म को एक प्रोड्यूसर मिल गया है, उस पर काम चल रहा है और जल्दी ही उस फिल्म की शूटिंग भी शुरू करेंगे। लेकिन जो आपने पात्र निभाया है, ऐसा कोई हवलदार हो देखा है आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में? मैंने हवलदार तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह से नाचने वाला हवलदार मैंने पहली बार देखा था। लेकिन वो भी एक ऐसा वाकया है कि जो सच में घटा और वो जो घटा वो भी दुनिया ने देखा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सच के करीब था। थैंक यू सो मच। फिल्म के बारे में आपने कंसेप्शन में क्या बताया, कैसी लगी फिल्म और क्या आपके जहन को छू गया? जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने सुना था इस फिल्म के बारे में, उससे कई ज़्यादा मुझे ये फिल्म पसंद आई। बहुत ही एक इमोशनल फिल्म थी, बहुत ही गट रेंचिंग फिल्म थी और जो परफॉर्मेंसेस मनोज सर एंड राजकुमार, I'm completely overwhelmed by the performances and
I'm so happy that these kind of films are being made, these kind of subjects are being tackled, and audiences are going to be watching this kind of films. I'm happy that we as an audience are open to this kind of content. Otherwise, you wouldn't have. I think in the last couple of years, you wouldn't have found so many people backing a film like this. You wouldn't have found people being a part of a film like this. So it's a good, very healthy trend, and I'm genuinely happy that a filmmaker like Hansal is brave enough to put out a film like this, and all the actors and the people who are backing it all are backing such good content. सर जो स्टार्स बहुत अभी हाईली पेड है सर, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पकड़ने से बहुत डरते हैं ताकि उनका कहीं स्टार्टअप में खो ना जाए, तो कितना गलत है क्योंकि पब्लिक ने आपको इतना अच्छी फिल्म में वॉच किया और फिर आप सेफ साइड चुनते हैं, कमर्शियल फिल्म देखते हैं, तो कितना सही है कितना गलत, कितनी ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई थिंक बड़े स्टार्स भी मैं बिकॉज आई इंटरेक्ट विद, आई नो दैट they are also looking for material, they are also looking to do something different. ऐसा नहीं कि वो ऐसे छोटी फिल्म करने से डरते, बिल्कुल ऐसा नहीं है. They want to take chances, but because certain films require certain scale, certain budgets, so when they do a film like that, they also make sure that it is scaled down in such a way that the budgets need to be correct enough to justify the film. So I'm sure that and you will see, you definitely bigger stars are also taking chances and doing films like this. So ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, but definitely कर रहे. Any scene of the film touches your heart? ऐसा I think the whole film only, you left when you're walking out of the film, I think the whole film only stays with you. Each and every moment was it was quite gut wrenching, but particularly I think that one moment of because Manoj sir was phenomenal, all the scenes that he was in. But for me, I think the last scene of I don't want to ruin the movie, but the funeral scene of Rajkumar was, I think, was very beautiful. I think that I'm sure that scene will not leave me for a long time. So at the last, Rajkumar dies in the film. No, he doesn't die, and I'm not giving away the plot of the film. If I'm putting out an interview, why would I spoil the film for anyone? Exactly. Nobody is dying in the film. क्योंकि सर वज़ीर एक थ्रिलर थी, तो आप भी चाहेंगे ऐसा कुछ सब्जेक्ट उठाना, इस संवेदनशील विषय जो आप जनता को दिखा सकें, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स. For sure, एक कहानी की बात है. अगर एक कहानी, it's not like I know just because I'm making thrillers, I'll only make thrillers. I would love to make films like this. I would love to tackle different kind of subjects. As a filmmaker, you want to keep challenging yourself. जैसे filmmakers are also artists, like actors keep challenging themselves and to do different roles. As filmmakers, also we would like to do different kind of films, and I would definitely love to do a film like this. Wish you all the best. Thank you. अब अगला दबंग का क्या डायलॉग था? थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, प्यार से. इतना प्यार आपको मिल डर नहीं, मतलब अच्छा लगता है आपके कलीग से आपको तारीफ और प्यार जब मिलता है तो वो अच्छा लगता है. एक दारोमदार ये आपको के कंधों पर ये आ गया कि जो आपकी अगली फिल्म होगी वो इससे भी दिग्गज हो, महल पे डाला हो, तो कोई ऐसे हर फिल्म नई चुनौती, नई जर्नी होती है और वो नई शुरुआत होती है. मैं उस तरह से देखता ही नहीं हूँ. अगर पिछली फिल्मों के साथ उनकी तुलना करते रहूँगी तो आगे काम ही नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में. क्योंकि सर फिल्म पूरी तैयार हो चुकी है, लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं उसको, तो अब आपको कमी नजर आती है कि इस जगह थोड़ी ये कमी लगी, मैं काश में कर पाता ये चीज़. एक ही कमी है फिल्म में, और बताओ क्या है? आप बताइए. डायरेक्टर बदल देता मैं. तो सर अभी कैसे लेते हैं सर आप अपनी तारीफ को, या आपका बड़ा क्रिटिक कौन है आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, कौन आपका बड़ा क्रिटिक है? अरे जो सच मिलता है कि यार ये चीज़ आपने ऐसी की. ज़्यादातर जिनको मैं अपने दोस्त और करीबी मानता हूँ वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी है और सबसे अच्छे दोस्त भी है. और मेरे टीम के लोग हैं वो मतलब क्रिटिकल होते हैं, मुझसे लड़ते हैं. मेरे परिवार के लोग हैं. मैं खुद अपने काम को लेकर बहुत क्रिटिकल होता हूँ. तो कभी कभी लोग कहते भी हैं कि थोड़ा कम हो अपने काम के प्रति इतने क्रिटिकल. हो गया, कर दिया, एक बार कर दिया फिर भूल जाओ. ओके हंसल, अगर बात करें हम आपके बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स और इसके बारे में थोड़ा कुछ कहा भी होगा कि आप यहाँ पे सुधार कर सकते थे, बट हाउ डू यू सी एट फ्राइडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑडियंसेस के लिए आप किस तरह? ये प्रेडिक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है. देखिए मैंने शायद जितेंद्र जी ने एक बार कहा था कि भाई दो तीन चीज़ें जिसका कोई आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है इलाज. एक है मतलब गंजेपन का,
गंजीपन का और बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का, इन दोनों का मतलब आज तक सही उपाय किसी को नहीं मिला है। नहीं सर, फिर काफ़ी अच्छी फिल्म जा रही है, सभी से रिव्यू मिल रहा है, काफ़ी आपने रोड शो भी किया था आज, तो भी कुछ तो उम्मीद होगी फिल्म को लेकर? उम्मीद है, उम्मीद हम फिल्म बनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि लोग आए, देखें, और जिस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आए, फिल्म देखें और फिल्म अपने साथ ले जाए, घर ले जाए, इन कैरेक्टर्स को अपने साथ घर ले जाए और थोड़ा सा प्रेरित हो। फिल्म की बात करें तो इस फिल्म पर ऑडियंस की टेस्ट जो है कुछ बदलते नजर आएंगे? नहीं, एक फिल्म से तो नहीं बदलेंगे, लेकिन फिल्म्स हमें बनाती रहनी पड़ेगी जिससे ऑडियंस का टेस्ट बदले, वो मतलब कुछ नया देखने की आदत डाले। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, हम फिल्म बनाते हैं सोच के कि चलिए अगर अगली फिल्म से ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा बदलेगा, वो और अलग तरह की फिल्म देखना चाहेगा, तो बस वही प्रयास होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
आपकी बच्ची का बर्थडे भी है, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। ये हंसल मेहता जी का आइडिया है कि शहर को हम अपने पोस्टर के ज़रिए गंदा नहीं करना चाहते, और अपने खुद के ज़रिए हम लोग अभी तक खुद की मेहनत से हम लोग अभी तक पब्लिसिटी कर रहे थे, और ये भी एक तरीका है कि हम लोगों के बीच आकर के अपनी फिल्म का प्रचार करें बिना शहर को गंदा किए हुए। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की कि हमारा अपना शहर है, हम कहते रहते हैं सफाई नहीं रहती, गंदा रहता है, और खुद ही इन पे अपनी दीवारों पे हर तरह की फिल्म के पोस्टर लगा के उसको गंदा करते रहते हैं। तो ये आई थिंक हंसल सर का एक इनिशिएटिव है कि हम ऐसा ना करें और खुद खड़े होकर अपनी फिल्म का पोस्टर करें, पकड़ें और प्रचार करें। ओके अंशुल जी, कितना नया तरीका है ना, एक जब क्या आने वाले वक्त में जो पोस्टर लगाने की प्रथा है वो भी कहीं खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को भी फिल्म देखने जाना चाहिए। जो अच्छी फिल्म है, ट्रेलर आपको इंटरनेट पे मिलता है, वो देखें, और मतलब फिल्म के मार्केटिंग बजट पे कम थोड़ा सा बोझ डालें, फिल्म देखें, फिल्म पसंद करें और फिल्म को सिल्वर जुबली कराएं जैसे पुराने ज़माने में होता था। हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई शहर को हम गंदा ना करें। दिल्ली में आप होर्डिंग साइन नहीं देखोगे, या बम्बई शहर है जहाँ पर होर्डिंग साइन लगते हैं, तो आप जहाँ भी जाते हो वहाँ जगह जगह मतलब फिल्म के होर्डिंग साइंस लगते हैं। और होर्डिंग साइन का होना मतलब थोड़ी है कि फिल्म बहुत अच्छी है, उसका मतलब ये है कि किसी ने खर्चा बहुत किया है। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे मनोज जी, मार्केटिंग की हम बात करें, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है हर लिहाज से। आई होप यू एग्री टोटली विद अस। बिल्कुल, तभी तो खड़े हैं यहाँ पे। और कई बार बहुत अच्छा, हमें इस चीज़ के कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। नहीं, इसके बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। कई बार कंटेंट अच्छा भी होता है लेकिन उसको उस तरह से लोगों तक पहुँचाया नहीं जा सकता। वो कहीं आप मानते हैं नेगेटिव साइन है। किसका नेगेटिव साइन? किसके? कंटेंट अच्छा है लेकिन प्रमोशन उस तरह से हो नहीं पाया है, या फिर ओवर प्रमोशन हो गया, फिर भी कंटेंट। देखिए बहुत सारी चीज़ें दर्शकों के ऊपर भी है। अच्छी फिल्म देखें, अच्छी फिल्म का प्रचार अब सोशल मीडिया के ज़रिए भी होता है, टेलीविज़न के ज़रिए भी हो जाता है। अच्छी फिल्म को पता करें और अच्छी फिल्म देखने जाएंगे तो प्रचार पे जो है बोझ कम होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च करने से ये होता है कि उसकी रिकवरी जो है उसकी बहुत मुश्किल हो जाती है फिल्म की। और फिल्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हर तरीके की फिल्में बनती हैं। बड़ी फिल्म पे भी बड़ा खर्चा अगर डाल दिया जाए तो उसको रिकवर करते करते बहुत मुश्किल होती है। और अच्छी फिल्मों पे तो हम लोग ज़्यादा ज़ोर शोर से इसीलिए लगते हैं क्योंकि न सिर्फ इसमें विश्वास होता है, बल्कि हम चाहते हैं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, आपके माध्यम से या हमारे अपने छोटे मोटे मेहनत के माध्यम से। तो इसकी कोशिश जारी रहेगी। अलीगढ़ को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और जितना फिल्म जितने रिलीज के कगार पे आ रही है, एक्सपेक्टेशन हाई होती जा रही है। आपके मुंबई फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई गई थी, तब से अब तक तारीफ हो रही है, आपके किरदार को लेकर बहुत सराहा जा रहा है। क्या यकीनन हर आर्टिस्ट एक सम्मान की उम्मीद करता है, पुरस्कार की उम्मीद करता है, क्या एक और नेशनल अवार्ड मनोज बाजपेयी? ये देखिए, हिंदुस्तान में तरह तरह की भाषाओं में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, तो ये कहना कि सिर्फ यही एक परफॉर्मेंस हुई नहीं, अभी पूरा साल बाकी है। बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं बड़ा होपफुल हूँ कि फिल्म को सम्मान मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे भविष्य में। पुरस्कारों से भी आगे जाए फिल्म, ये मेरी दिली तमन्ना है। ओके संजय दत्त, आप दोनों से मैं देंगे, संजय दत्त को 25 फेब को रिहा करा जा रहा है, कितनी अच्छी खबर है इंडस्ट्री के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं संजू को जानता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि संजू जो है फाइनली 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे अपने घर, अपने परिवार के साथ होंगे, अपने दोस्तों के साथ होंगे, और हम इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और हमेशा हम उनकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। वो सेम फीलिंग्स, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि वो आ रहे हैं, और हम सब मैं उनका खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, उनको देख के बड़े हुए हैं हम, और वो रिस्पेक्टफुली अपनी सज़ा को पूरा करके आई थिंक एक मेंटल प्रेशर जो था वो भी खत्म हो गया है अभी, एंड आई थिंक he'll be an amazing guy, he'll be back all over again. Thank you so much. Thank you very much.